Good evening. Good evening everyone. Good evening. तैयारी चल रही है बढ़िया से? मैं बढ़िया। तुम लोग बताओ, तैयारी चल रही है ना बढ़िया से? बाकी सारे सब्जेक्ट के कर रहे हो ना बढ़िया से? छोड़ना नहीं, इस बार दम निकाल देना सीयूटी का। हाँ। आज हम लोग प्लांट ब्रीडिंग का देखेंगे, जितना मैक्सिमम चीजें हम लोग कवर करेंगे, टाइम जितना भी लगे कोशिश करेंगे 2 घंटे मैक्सिमम 2.5 आवर मैक्स टू मैक्स, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर ले, खत्म करें इसको। The book is enough to secure 200 plus marks in CUET PG. Look, if you are thinking about Nemra Sunda only and if your concepts are not clear already, then I don't think Nemra Sunda will be enough, because nowadays questions are coming very conceptual point of view. Okay, so if you have some raw knowledge about the subjects, yes, Nemra Sunda will be enough. But if you are thinking to rely alone on Nemra Sunda, then I don't think that's a good idea. But try to attend our marathon classes. I think most of the classes has been conducted already. I think Nemra Sunda and Arun Katyan. Arun Katyan have 2 books only. I think Fundamental of Agriculture Part 1 and 2. So mixture of Nemra Sunda and Arun Katyan is good. And another book is there. If someone is following Malwa, then it's good actually. Voice is coming properly or not? You people are getting my voice, or I am speaking too much low? You people are getting my voice? Okay. So tell me, my voice is coming clearly or not? So, sorry. Little low. Okay. Let me see what can I do about that. Okay. Voice is low. Okay. Okay. We will check it and let me solve that problem. Okay, so now tell me, my voice is clear or not? You people are getting my voice or not? Okay. Okay, okay. So now it's okay now? Okay. Okay, thank you, thank you. Okay. So can we start now? Okay. So we are going to start. So before starting, I just want to know, is there any English medium people are here or not? There might be some people from English medium as well. Good evening. So people are there from Hindi medium only, or they are from English medium? First tell me, how many of you are from English medium? So that I will able to know whether I should keep it in bilingual or
Okay, so I will try to okay, I will try to keep the content in both the languages. So let's start. Okay, we will. I will try to speak in English as well as Hindi. So as we all know that, can you tell me who told this that plant breeding is plant evolution directed by man? Can you tell me? आप बता सकते हो किसने बोला था ये? And is it fine for you all that we will move slightly fast because it's a revision series and we have to complete or cover the entire content of plant breeding, which is not possible to, if you will not go fast, it is not possible for me or anyone to complete the whole syllabus in 2 hours. Okay. So we will go slightly fast. Don't worry about it. If you will face any confusion, I will try to clear it. Okay. So it was said by Webby Law. And I will tell you all that you should remember this data that in 2022, 24, 25, the total food grain production of India was nearly 357.73 million ton. Okay. So, plant breeding has been advanced from domestication phase to nowadays gene editing era. So how it advanced? So first, what our farmers they did. So early people they first tried to domesticate the wild varieties or the crops who were there in wild. So what do you mean? What do you get it by domestication? What do you understand by domestication? Domestication simply means bringing wild species under human management. So हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो wild species है उसको क्या करते हैं, human management के अंदर लाते हैं. ठीक है, जैसे कि हर crop तो पहले wild में ही होता होगा. Every crop was found to be in wild only ना. So what they did, they selected species or plants from the wild. They started cultivating it. Okay, so first stage was domestication, to bringing out wild species under human management. Second stage was selection phase. So they have उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर तो ले आया, ठीक है, बट दे फाउंड दैट मोस्ट ऑफ देम वेर सुपीरियर, फ्यू ऑफ देम वेर inferior, or might be vice versa, that some of them might be superior, some of them might be inferior. So they selected the superior ones, and selection means differential reproduction of one at the cost of another. So they started growing those plants only that had superior traits. Okay, so that was the selection phase. And one thing that people have to keep in mind, that selection only utilizes the variation that is already present in the population. So population में जो variation already present है उसी को हम selection के through utilize कर सकते हैं. Okay, but what do you think if the variation is already not present in your population? So अगर हमारे population में variation नहीं present है तो हम क्या करेंगे? Then you will go to create variation. So you will have to go for creation of variation. So the simplest method of creation of variation is hybridization. So what will you do in hybridization? You will pick two varieties. You will pick two varieties, two species. You will cross between them, and the F1 will have the characteristic of both the parents. Okay. So the simplest method of creation of variation in your population is hybridization. Okay, we do that in self-pollinated crop as well, like in bulk breeding, pedigree, and single seed descent method. What you do, you start your breeding material or your breeding method starts with hybridization of two parent. Okay, so then came the phases of novel genetic variation. अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी तो दोनों पेरेंट्स में वेरिएशन प्रेजेंट होना चाहिए या फिर वो ट्रेट्स प्रेजेंट होना चाहिए, बट you tried searching for that and you got to know that none of that variation is not present in none of the parents. So what will you do? You will try to create that variation through mutation. Okay, one of the simplest method, not the simplest method. You will that method will come first in your mind, that we can create that variation through mutation. So एक बात बताओ, म्यूटेशन को डिस्कवर किसने किया था? आप लोगों ने अभी पढ़ रहे होगे, who discovered the mutation first? I'm not getting any answers in the chat. Okay, so can you tell me who created the who discovered the mutation? Anyone? So mutation was discovered by
mutation was discovered. The first person. No. Hugo de Vries gave the term mutation, but it is believed that mutation was first observed by Set Wright. Hugo de Vries gave the term mutation. Okay, and who was the first person? No. T.H. Morgan discovered the sex linkage. Set Wright is correct. That question came in, I think, CUET PG 2024, and they have according to them, Set Wright and Hugo de Vries both were correct. Okay, so if the option will in option you will get Set Wright and Hugo de Vries. Don't worry, they will consider both the options. Okay, and who was the first person to use mutagens or any kind of mutation in crops? Do you know that person? So it was L.J. Stadler. So it was Stadler who used X-ray to induce mutation in barley. And year कौन सा था? Which year was it? It was 1928. So Stadler was first person to use X-ray on barley. Okay, so you used mutation, but later it was found that that mutation is non-random. Sorry, it's random. It can occur anywhere in the genome. Okay, टारगेट म्यूटाजेनेसिस भी करोगे तो भी चांसेस बहुत कम होते हैं कि तुम्हें वो डिजायर्ड रिजल्ट मिले. ओके ओके सो हम अब की तरफ जो जा रहे हैं ना, जब म्यूटेशन डिस्कवर हुआ था तो लोगों को लगा था कि बहुत ही अनोखा चीज उन्होंने डिस्कवर कर लिया है, दैट दे हैव डिस्कवर्ड समथिंग यूनिक एंड दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ओवरनाइट एंड दे कैन गेट सम वेरिएशंस विद इन ओवरनाइट. बट द थिंग इज दैट mutation if you will try, you will not get the desired result very quickly. You have to do a lot of selection. Okay, then came the genetic engineering era. Okay, what we do in that? What we do, we can do the gene editing, we can go for transgenic varieties, all like that. So can you tell me the names of two varieties that has been released just now? In case of rice, it has been a it is a genome edited rice. What is the name of the variety? हाँ, short leg था इसका सिप का. Yes. So can you tell me the name of two variety of rice who just has been released last year? हाँ, DRR धान. क्या नाम था? हाँ, एक क्या था? कमला. So try to remember that because question might come in your exam from that. Okay. So you all know that that first agriculture research institute was established in Pusa. Okay, and you know the first agriculture college was established in 1905 only in the 5 places. One of them was BSc, Bengal Agriculture College, now currently known as Bihar Agriculture University, Sabor. It was one of the first college, and there was 5 colleges which was established in 1905. Then what happened in 1936? There was an earthquake in 1934. So every buildings was collapsed, and because of that they had to move their every structure and every facilities to Delhi. Okay, so 1946 the Imperial Agriculture Research Institute was renamed as Indian Council of Agriculture. Agriculture Research was renamed as Indian Council of Agriculture Research. And I have already discussed during my when we are discussing our previous year question, we have discussed that in 1956 we had an agreement with Ford Foundation, Rockefeller Foundation, and because of that that All India Coordinated Maize Improvement Project was launched. Okay. And in 1960, first agriculture university was established at Pantnagar. Okay. So what are the achievement we got through plant breeding? So first I am going to talk about semi-dwarf wheat and rice. So can you people tell me the dwarfing gene in rice and dwarfing gene in wheat?
कैन यू टेल मी? बताओ क्या है डॉर्फिंग जीन इन केस ऑफ राइस? जल्दी जल्दी, अपने को आगे भी चलना है। डॉर्फिंग जीन इन केस ऑफ राइस? No, 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 no. DGO-oogen is not a gene, it's a variety. DGO-oogen is a variety. Okay, Norin 10 and DGO-oogen is variety. It's a dwarfing gene source. Okay, most of the people are confused with the fact that they consider DGO-oogen and Norin 10 as a gene. These are not genes, these are varieties who are the sources for our dwarfing gene. Okay, so dwarfing gene in case of rice is HD1, HD2, okay, and in case of wheat it is RHT1, RHT2, okay, and the source for dwarfing gene in rice is DGO-oogen, and for wheat it is Norin 10, okay. So you should not get confused with that. And in case of rice, if we will talk about rice, okay, so you got this now? Okay, okay, everyone is right actually. So if we will talk about rice, then what do you know which variety that first came into existence, which was having a dwarf stature? पता है, कोई बता सकता है कौन सी पहली वैरायटी आई थी जो कि भी इस तरीके की थी, जिसका शॉर्ट स्ट्रेचर था, जिसको आज भी यूज किया जाता है डॉर्फिंग जीन के सोर्स के लिए? सो please tell contribution of Mueller. Mueller was first one to discover the X-ray action. I think action of X-ray and mutagen. It was he induces mutation in Drosophila using X-ray. म्यूटेशन, हाँ, मुलर ने सबसे पहले एक्सरे का यूज किया था ड्रोसोफिला पर, स्टेलर से पहले कर लिया था 1927 आई थिंक। हाँ, तो क्या हुआ था कि हमारा T1 हमने बनाया राइस में, वो किसके किसके बीच का क्रॉस करके बनाया? DGO-oogen, it was crossed with Yuan Chung, ठीक है। देन हमने क्या कराया? IR8, मोस्टली अभी हम इसको डॉर्फिंग जीन के सोर्स की तरह अभी जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं, ओके, यूज करते हैं। इसके ये किसके किसके बीच का क्रॉस है? IR8 किसके किसके बीच का क्रॉस है? बताओ। IR8 is cross between which of the following? One of them is DGO-oogen, another one is it is a cross between DGO-oogen and, tell me. हाँ, you people are right, it is cross between DGO-oogen into PETA. So what we did, we introduced TN1, okay, and सबसे पहला, this is known as miracle rice of world. Then we introduced TN1, then we developed Jaya. Do you know Jaya is known as miracle rice of India? It is cross between TN1 into type 141. Okay, so this Jaya is known as miracle rice of India, and this IR8 is known as miracle rice of world. Okay, so I think these things are clear for you all. So can I remove this? Okay, okay. IR8, okay. So can I remove this? So I am going to remove this, okay. So let's discuss about novelization of Indian cane. So the problem was that the tropical cane, was hardy but have low sugar content, and the cane that is Saccharum officinarum
it had good sugar content, but it was not able to survive अब क्या था ऐसा कि हमारा जो ट्रॉपिकल केन था वो तो वो क्या था हमारा हार्डी था, जो कि सैकरम स्पॉन्टेनियम हो गया, बारबेरी हो गया। तो हमारे जो वेंकटरमन थे और वेंकटरमन थे हमारा, जो कोयम्बटूर पर काम कर रहे थे, एसबीआई शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में काम कर रहे थे, वाज वर्किंग एट एसबीआई कोयम्बटूर। सो they had a major role in nobilization of cane. What they did, they transferred this hardy nature of this saccharum spontaneum, this tropical cane, to the high sugar content saccharum officinarum. So many cane species were used, like saccharum officinarum, spontaneum, barberry, robustum. All these were used. Okay. This is right actually. So then we are going to talk about hybrid millet. Okay. So CSH1, it was launched in 1964. It was first sorghum variety, first sorghum hybrid. And HB1, HB1, it was released in 1965 by DS Atwal. Okay. So you have to remember the name of these variety. I will give you the name of other varieties too related with millets, but first you have to keep this in mind that CSS1 was first variety of sorghum. It was released in 1964, and HB1 was first variety of hybrid variety of pearl millet. And earlier than I think 1965 or 64, most of the millet variety were I think land races and normal varieties. So after the release of these variety, the area covered by variety has been significantly increased, and now we are seeing the massive jump in the production of millets. Okay, because of that. So you might be knowing about these hybrid cotton. So which was the first hybrid to be released? If you are going to talk about cotton, then which was the first hybrid that was released, and who was the scientist? Can you tell me? So it was H4. The breeder involved was C.T. Patel. Year is 1970, and it was intra-hirsutum variety. So the cross involved was Gujarat 67 into American nectary less. Okay. I don't think कि किसी को confusion होगा. हाँ, C.T. पटेल थे. Then ये हमारा क्या था? इंट्रा हिर्सुटम वेराइटी था. Gossypium hirsutum क्रॉस Gossypium hirsutum. Gujarat 67 was also a variety of Gossypium hirsutum, and American Netrilus is also a variety of Gossypium hirsutum. Then came the Vara Lakshmi. You might be knowing about that also. Vara Lakshmi. वारा लक्ष्मी जो क्रॉस था हमारा, वो गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बारबाडेंस, ये जो था फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड था कॉटन का. And it was released in year 1972. Okay. Then we have gained a significant achievement in terms of molecular breeding too. So can you tell me about which was the first variety to be released by marker registered selection in India? Can you tell me the name? Which was the first variety to be released with the help of marker registered selection in India? Which was the first variety? I have discussed it during our breeding classes. So people who have attended my breeding classes might be knowing that. Which variety was first to be released? If we are going to talk about, नहीं पूसा बासमती 1 नहीं था. And which crop was it?
Which crop was it? Tell me, crop का नाम तो बताओ. So first variety to be released was HHB 67 improved. Okay, and it was the variety of pearl millet. Okay, then other varieties are improved Pusa Basmati 1. It was the first actually. Improved Pusa Basmati 1. Then another one is improved Samba Mansuri. These are the variety which we have released through marker state selection. Okay, then we have also released some varieties through transgenic breeding. Okay, one of them is BT cotton. BT cotton इंडिया में कब आया था? कब से कल्टीवेट कर रहे हैं BT cotton को इंडिया में हम? कब से कल्टीवेट कर रहे हैं BT cotton को इंडिया में हम? In which year we started cultivating BT cotton, and in which year it was given permission by our government that we can cultivate this BT cotton? Tell me the year. Okay, so it was 2002. In 2002 we started cultivating BT cotton. Okay, so I think it's all has been clear. So introduction part हमारा over हुआ. अब हम चलते हैं next part पे. ओके, सो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमारा कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं. जैसे हम क्या हो रहा है, we are cultivating only similar type of variety in entire region. So what will happen because of that? So genetic erosion means so what we are doing nowadays, we are cultivating similar type of variety in an entire region, and because of that our land races and our local and desi varieties which we used to cultivate earlier than the release of these varieties, so we are not using that, and because of that it is getting out of place, and it is getting loss. We are losing these varieties, and loss of variation. It is simply loss of variation. And what will happen because of genetic erosion? So we are using similar kind of variety. Just take example in terms of rice. So we are using pure line varieties, or even we can say hybrids. So entire field is consist of similar kind of variety. So these varieties have okay, traditional varieties are replaced by modern high yielding varieties. And traditional varieties में क्या था, हर प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स के अलग अलग जीनोटाइप थे. डिफरेंट प्लांट had different genotype. Population was not consist entirely by one genotype. Okay, so but nowadays we are using entirely our field is entirely consist of single type of variety. Because of that, if the variation is very less, then you have you get a condition in which if a pest will attack your field or a region, you might face a situation in which you might lose your entire crop. So हमारा पूरा क्रॉप लॉस हो सकता है. ओके, और ये भी हो सकता है कि पूरे रीजन की डाइवर्सिटी खतरे में आ जाए, ये हमारा नैरो जेनेटिक बेस के कारण. देन हमारा क्या है, इल्ड प्लेटू. अब हमारे ट्रेडिशनल मेथड बिकॉज ऑफ कितना भी कोशिश कर लो, एक सर्टेन लिमिट तक ही हम इल्ड को बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा हम इल्ड को नहीं बढ़ा सकते हैं. ठीक है ना. थ्रू ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड वी कैन ओनली इंक्रीज द इल्ड अप टू सर्टेन पॉइंट. आफ्टर दैट इट विल रीच अ प्लेटू, because from that point we will not able to increase our yield. Okay, so here are the names of some important scientists. You might be knowing that T.S. Venkatraman was involved in novelization of cane. B.P. Pal developed the NP series of wheat varieties. You know NP series. NP series means new Pusa.
I have seen the new Pusa varieties. NP means new Pusa varieties. It is released from IARI. So NP seeds of which wheat was used to be very tall. It was during our just we gained independence, and these varieties started to getting released. Okay, and VP Pal has a major contribution in releasing these varieties. Then MS Swaminathan, he is also known as father of green revolution in India. Who is known as father of green revolution in world? Do you know who is the father of green revolution in world? So father of green revolution in world is, जल्दी जल्दी बताओ. Norman E. Borlaug. Okay, and who coined the term green revolution? टर्म किसने दिया था? विलियम एस गॉड. ओके, विलियम एस गॉड ने दिया था टर्म. इसके बाद टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दिया था? एवरग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म किसने दिया था? गॉड ने नहीं दिया था एवरग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म. गॉड ने दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म. एवरग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म दिया था हमारे MS स्वामीनाथन ने. MS Swaminathan gave the term evergreen evolution. Then Dr. S. Ramanujam, he was a potato breeder who developed the true potato seed. And then Pushkar Nath, he developed the seed plot technique. Then you can try to read the names of the variety. I don't think it is necessary to discuss all those things, but you have to remember that. Okay, it might come in your examination. You can take the screenshot, you can take the picture. Okay. So when we are look, there are three types of selection that occurs in nature. Okay, one of them is directional selection, another one is stabilizing selection, and the third one is disruptive selection. We will talk about this one by one. So first we are going to talk about directional selection. Okay. See, you can see that there are three type of plants or three genotypes we have. One is recessive one is heterozygous one, and the third one is homozygous dominant one. So in directional selection, according to you, which population or which plants are going to be selected? The left corner or right corner or the middle one? Okay, okay. My English is not that much good. Okay, I am trying. I know my English is not that much good, but I will try to explain in Hindi as well as English. So don't worry. We will keep the content in English as well as Hindi. Okay. So tell me one thing. If in directional selection, you are going to select these ones, the left corner, the right corner, or the middle one? Okay, I think comments are coming very slowly. Okay. No, in directional selection, you are going to select the extremes, one extreme at a time. Okay. You can select any of the extreme. Okay. Whether you can select this extreme or whether you can select this extreme. So when extreme individuals of the population are getting selected, that type of selection is called directional selection. Okay. When the extreme of the population, extreme individual of the population. So extreme individual of the population are, these are the recessive individuals which are also at the extreme, and these are the dominant homozygous individual who are at the extreme. So when individuals at the extreme, not both the extreme, one of the extreme is going to be selected, okay, that is known as directional selection. So what we do actually in plant breeding? In plant breeding, mostly we go for directional selection. Okay. Okay. So हमने यहाँ का select कर लिया, तो हम इसको बोले directional selection. एक extreme को select कर लिया. ठीक है.
एक एक्सट्रीम को सिलेक्ट कर लिया तो हमने उसको बोला डायरेक्शनल सिलेक्शन। ओके, और बताओ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि सिलेक्शन प्रेशर जो है, सिलेक्शन प्रेशर हमारा वर्क करता है, सिलेक्शन प्रेशर इज वर्किंग अगेंस्ट द एक्सट्रीम फिनोटाइप एंड इट इज वर्क इन द फेवर ऑफ इंटरमीडिएट टाइप। सो इंटरमीडिएट वाला कौन सा हमारा है, बीच वाला है। सो दिस individual and these type of individual, intermediate individual will be selected. Nature will, in nature mostly the stabilization selection is working, so intermediate phenotype individuals will be selected. Okay, and the selection pressure will work against the extreme type. Okay, so by definition, if you want to say that, if anyone will ask you or in the exam the statement will come when the selection favors or the selection works in the favor of, or the selection pressure works in the favor of intermediate phenotype types, then that type of selection is known as stabilizing selection. Okay, so यहां पर क्या हमारा सिलेक्ट हो रहा है, यहां पर हमारा सिलेक्ट हो रहा है इंटरमीडिएट वाला. Okay, now tell me about disruptive selection. When the individuals at both the extremes are selected and the intermediate phenotype are selected against, यानी इसके अगेंस्ट में सिलेक्शन प्रेशर काम करेगा और इन दोनों के फेवर में काम करेगा. When the individuals at the both the extreme are selected at once, this type of selection is known as disruptive selection. Okay, हाँ, दोनों एक्सट्रीम को हम सिलेक्ट करेंगे. Then in this case we get a graph like this. We get bimodal type of graph in our population. बाइमोडल टाइप का क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट वाला हमारा यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, इंटरमीडिएट वाला हमारे पास के अगेंस्ट सिलेक्शन प्रेशर काम किया और दोनों इंडिविजुअल्स दोनों एक्सट्रीम पर थे उनके फेवर में काम किया. तो हमारा जो ग्राफ बन करके आएगा न्यू पॉपुलेशन का सिलेक्शन के बाद डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन के केस में वो इस तरीके का होगा. एंड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन लीड्स टू स्पेसिएशन. ओके, व्हाई इट विल लीड टू स्पेसिएशन, क्योंकि हमने इस एक्सट्रीम को भी सिलेक्ट किया, इस एक्सट्रीम को भी सिलेक्ट किया, इनका भी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन करा, उनका भी करा है, तो आगे जाकर के क्या हो जाएगा हमारे ये न्यू स्पीशीज में बदल सकते हैं. ओके, in plant breeding we mostly go for directional selection. Look, if you are going into field and you have to look for the plants and you are doing selection for the yield only, so you will look for the plants which are good in yield contributing traits. जिनका yield contributing traits ज्यादा होगा उनको लोगे. Okay, मान लो कि तुम्हें अगर तुम्हारे एरिया में लॉजिंग ज्यादा हो रहा है, you are facing lodging problem in your area, then you are going to select only those plants who are shorter in stature. So mostly in plant breeding we go for directional selection, mostly, not always, mostly. Okay. Okay, so tell me about germplasm. So how do you understand by germplasm? So it is the total hereditary material that is present in a crop species or its related species combined. It is known as germplasm. Okay, we use germplasm, gene pool, and these are all related terms. But germplasm, if you will talk about gene pool is just somewhat slightly different. It was based on crossability, where different type of gene pool. So we divide gene pool into GP1, GP2, GP3 like that. But germplasm is a wider term. We use germplasm for related species as well as the cultivated one. So all these combined and all the genes present in these cultivated and wild species, wild relative or wild form, all these comes under the germplasm. Okay. So germplasm can be cultivated ones, it can be from the wild ones, and we classify according to our collection also whether it can be collected in the country, so it is known as indigenous, and if we have collected from the outside our country, then it is known as exotic germplasm. So there are various components of germplasm. First one is landrace. Landrace is our very old type of old type of variety. We cannot simply say that variety. It is the desi or landrace type of thing which were cultivated by the farmers previously. Okay. Then obsolete varieties. The obsolete variety is nothing but the improved variety of near past, that जो past में हम लोग यूज कर रहे थे बट अभी उतना कल्टीवेशन में नहीं है, जैसे कि K65 वगैरह जो हम लोग का यूज करते थे. ओके, देन मॉडर्न कल्टीवार, जो हमारा जो पूसा बासमती 1 वगैरह है, जो मॉडर्न कल्टीवार है जो अभी कल्टीवेशन में है, वो हमारा मॉडर्न कल्टीवार हो गया. इसके बाद एडवांस ब्रीडिंग मटेरियल. ये वो मटेरियल होता है ना कि जो कि अभी रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है, अभी अंदर प्रोग्रेस है, अभी रिलीज नहीं हुआ है. देन हमारा है वाइल्ड फॉर्म एंड वाइल्ड रिलेटिव. ओके, वाइल्ड फॉर्म एंड वाइल्ड रिलेटिव.
these are also very good, ये जो होते हैं ना हमारे, these are the good source of resistant genes, okay, but the problem with them are, if you are going to transfer some important genes, there you will might face a problem with in case of linkage drag, okay. So linkage drag is nothing when you get a desirable gene and undesirable gene, because they are linked, okay. Then there are some mutants. We use mutants like the HD1, HD2. These are all mutants. RST1, RST2. These are or mutant genes. Okay. So we have already understood about the germplasm. Now we are going to talk about germplasm conservation. So there are generally two methods of germplasm conservation. First one is in situ. अगर आप उनको उसी एरिया में कंजर्व करोगे जहां उनका नेटिव प्लेस है, तो हो गया हमारा इन सिटू। जैसे कि हमारा नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है एंड जीन सेंचुरीज है, ठीक है। और ये हमारा कहां पर होता है? सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में ही या फिर सेंटर ऑफ ओरिजिन में ही हमारा लोकेटेड होता है, ठीक है। जीन सेंचुरी की बात किया जाए तो एनबीपीजीआर का हमारा है सिट्रस का मेघालय में है, ठीक है ना। और जो हमारा इसका है मेंजीफेरा का है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। इसके बाद अगर एक सिटी की बात किया जाए तो इतने सारे आपके पास ज्यादा डिटेल में ओके देखो, वाइल्ड फॉर्म और वाइल्ड रिलेटिव जो हमारे होते हैं ना, वो हमारे कैसे होते हैं? वाइल्ड फॉर्म अगर बात किया जाए, वाइल्ड फॉर्म है, बस एक बात बताओ, दीज आर जस्ट दी वाइल्ड फॉर्म एंड दीज आर दी वाइल्ड रिलेटिव, ओके। इससे क्या होता है कि हम ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स, जैसे कि ये नेचर में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, तो इनके पास काफी अच्छा रेजिस्टेंस होता है, जो नेचर का जो एबायोटिक स्टेज या बायोटिक स्टेज होता है, इससे जो है हमारा रेजिस्टेंस जीन्स इसमें अच्छे से होता है, क्योंकि ये कोप अप करते आ रहे हैं नेचुरल कंडीशन में, ओके। तो ये हमारे लिए गुड सोर्स ऑफ जीन्स होते हैं एबायोटिक और बायोटिक स्टेज के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इनमें कुछ वाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं। तो अब क्या, अगर हम इनसे जीन ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि हमारे उस रेजिस्टेंस जीन के साथ साथ कुछ हो सकता है कि वाइल्ड जो होता है ना कैरेक्टरिस्टिक वाले जीन्स भी अटैच्ड हो। मान लो हमें हेयरीनेस नहीं चाहिए, वाइल्ड वाले में हेयरीनेस था, ठीक है। हाँ, एडेप्टेबिलिटी का भी सोर्स है, लेकिन अगर ट्रांसफर करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे जो ट्रांसफर किया जीन्स उससे कुछ अनडिजायरेबल जीन लिंक थे, और इसके बाद हाँ, इसके बाद क्या होगा, तुम्हारा कुछ वाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, जैसे कि हेयरीनेस आ गया, या फिर जो है सो लॉन्ग स्ट्रेचर आ गया। इसके कारण हमको दिक्कत फेस करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि बैक क्रॉसिंग के थ्रू हम उस क्या होता है ना, लिंकेज को ड्रैग को अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर लिंकेज को ब्रेक करते हैं, ओके, ठीक है। आपके एग्जाम में, इन योर एग्जाम क्वेश्चंस माइट बी कम। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो एक छोटी देखो, आपका अगर क्वेश्चन आएगा, मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। आप अपना काम यहाँ पर है डिटेल में चीजों को डिस्कस करना नहीं है, जो है सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राई टू रिमेंबर ओनली दोज थिंग्स व्हिच आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम। Means wild form means the main ancestor which are the main source of the genes, and wild related are some other wild species under the same genus. हाँ okay, so हाँ, we are going to we are discussing about this only. So these are important for exam point of view. So अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन सा इन सिटू है, कौन सा एक्स सिटू है, इतना डिटेल में नहीं आएगा कि किसमें क्या करते हैं। इसमें ध्यान रखना कि कौन सा इन सिटू मेथड है, कौन सा एक्स सिटू मेथड है। तो एक्स सिटू का हमारा मेथड है सीड जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक। ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज बाय दिस फील्ड जीन बैंक ओनली। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फील्ड जीन बैंक आर एक्स सिटू मेथड ऑफ conservation, okay. Then shoot tip gene bank, cell and organ gene bank, then DNA gene bank. These are all methods of ex situ germplasm conservation. And for in situ germplasm conservation, we have national park, biosphere reserve and gene sanctuaries, okay. So there are various type of seed bank collections. So first one is base collection. Base collection we do it for longer times. We do it for longer times, for 50 to 100 years. The temperature we is -18 to -20, and the moisture percent is nearly 5%, okay. And germination test,
हर 10 ईयर से 15 ईयर पर हमें जर्मिनेशन टेस्ट करना पड़ता है. वी हैव टू डू इट बिकॉज देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट सम ऑफ द सीड माइट लूज इट्स वायबिलिटी. So to check its viability, to check its germination percentage, we have to carry out this germination test every 10 to 15 years. So conditions are maintained to conserve the seed or germplasm for longer duration of time. So nearly 50, you can store it here for 50 to 100 years. They are not used for general experimentation purpose or for breeding purposes. Okay. Then comes the active collection. Active collection, we store it for medium period of time, generally about 10 to 30 years. And the conditions are maintained about 0 to 10 degrees Celsius and 5 to 8% moisture percentage. Okay. So these are these can be used for evaluation, research, and multiplication purposes. Okay, but the main important thing is this working collection. This is also known as breeders collection. So these collections are generally used by. Okay, we will discuss. Gene pool concept was given by Harlan and Dewitt on the basis of crossability. So in GP1, those species are included which have which produces fertile offspring on by crossing. Okay, and GP2 in GP2 we place those species by which in which we will do the crossing and we can get a 50% or 25%. We get partially fertile offspring. So. And in GP3, you get the crossability. You cannot generally cross these species. So we might require special techniques. So gene pool concept was given on the basis of crossability. There is another gene ocean, we call it GP4, in which we can store every DNA samples, whether it is transgenic or other species. We store DNA samples. We include DNA samples in GP4. Okay. So I think तुम्हें क्लियर हो गया होगा जीन पूल का कंसेप्ट. ओके, सो जस्ट रिमेंबर जीन पूल कंसेप्ट वाज गिवन बाय हार्लन एंड ड्यूवेट. इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि सीयूईटी में पूछा जाएगा. ओके, बट इसमें जो है सो ना हमारा एक्टिव कलेक्शन और बेस कलेक्शन में टेम्परेचर कितने दिन के लिए करते हैं, जर्मिनेशन टेस्ट किस के लिए करते हैं, इसके बाद वर्किंग कलेक्शन क्या होता है, इसको ध्यान में रखना है. तो वर्किंग कलेक्शन इज आल्सो नोन एज ब्रीडर्स कलेक्शन बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय ब्रीडर फॉर हिज ब्रीडिंग प्रोग्राम. ओके, देन अनदर टर्म इज कोर कलेक्शन. कोर कलेक्शन टर्म वाज गिवन बाय फ्रैंकल एंड ब्राउन इन ईयर 1984 आई गेस. सो इट इज द सबसेट ऑफ बेस कलेक्शन. यानी बेस कलेक्शन देखो, बेस कलेक्शन में बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, हर एक सेशन प्रेजेंट होता है, लेकिन उस सारे को हम यूज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज इट all at a time to test its germination percentage or viability. So what we do, we take samples from base collection which represent the entire base collection. That is known as core collection. So that is known as core collection. It is a subset of base collection. It represents the entire variability that is present in the base collection. Okay. Then we might be knowing about the IPGRI. It was previously known as IBPGR, International Bureau of Plant Genetic Resource, but currently it is known as International Plant Genetic Resource Institute. Okay, so it was founded in the IBPGR. It was founded in I think very earlier than this IPGRI. So if someone asked you IPGR was set up by, it was set up by CGIAR, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इन 1994. और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, रोम इटली में है. बस इतना ध्यान रखना है इसमें, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा. और जो हमारा इंडिया में है, इंडिया में एनबीपीजीआर है. एनबीपीजीआर कब आया था, कोई बता सकता है मुझे? एनबीपीजीआर कब एस्टेब्लिश किया गया था? विदाउट लुकिंग एट द बोर्ड, कैन यू टेल मी इन व्हिच ईयर एनबीपीजीआर वाज एस्टेब्लिश्ड? Can you tell me the year, in which year it was established? नहीं, 1946 में तो प्लांट इंट्रोडक्शन डिवीजन बना था. ठीक है, बताओ 1976 या 74? 1970. ओके ओके, सो 1976. हाँ, you people are right actually, 1976. Okay, so NBPGR has
No, it is not 1946. The Plant Introduction Division in IRI was set up in 1946. It was mainly responsible for introduction of plant material in the India. But now the main this job is taken up by NBPGR. So it is the sole agency for plant-based material introduction in India. Okay. सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड. सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है. इससे ज्यादा नहीं पूछेगा. रीजनल स्टेशन इसका कितना है? 10 रीजनल स्टेशन है. इससे ज्यादा नहीं याद रखना है तुम्हें. ये लिखा हुआ है, बस इससे ज्यादा याद नहीं रखना है. आईपीजीआरआई जो है सो कब स्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है. एनबीपीजीआर कब स्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका काम क्या है. काम क्या है इसका? मेनली काम है कंजर्वेशन, इवेल्युएशन और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम है. बट याद रखना, इट इज द सोल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया. ओके. देन सेंटर ऑफ ओरिजिन टर्म कौन दिया था? सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने डिस्कस किया था? हु कॉइन्ड द टर्म सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड हु गेव दिस सेंटर ऑफ ओरिजिन? हु गेव सेंटर ऑफ ओरिजिन? Who gave center of origin? हाँ, N.I. Vavilov in 1926 and 1926 he gave this 8 center of origin. Later he divided the Hindustan and these American ones into 3 and 2. Okay, so later in 1935 total center of origin became I think 11. Okay, so here are the center of origin that is given and the crops originated there. So I will so you can check that. Okay, so the questions I generally do not comes from this chart. Okay. Might be some questions, there are chances that some question might be come from this chart, but you have to keep in mind that center of origin was given by, who gave this? It was given by N.I. Vavilov in 1926 and 1935. I want to ask a simple question. Who gave the law of parallel homologous series and law of parallel variation? Who gave law of homologous series and law of parallel variation? Law of homologous series and law of parallel variation. It was given by Vavilov only. So Vavilov said that variation present in one species, try to remember, variation present in one species will be present in variation in related species. यानी एक स्पीसीज में जो वेरिएशन प्रेजेंट होगा वो उसके रिलेटेड स्पीसीज में भी वेरिएशन प्रेजेंट होगा. इसी को बोला गया लॉ ऑफ होमोलॉगस सीरीज या फिर लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन. पैरेलल वेरिएशन क्यों? क्योंकि अगर किसी एक स्पीसीज में वेरिएशन प्रेजेंट है तो पैरेलली अदर स्पीसीज में भी वो वेरिएशन प्रेजेंट होगा. एग्जाम सेंटर अदर स्टेट में दे दिया है, कोई बात नहीं. एग्जाम सेंटर अदर स्टेट में दे दिया है तो अच्छा है ना, घूम के आना, एग्जाम दे देना, फिर घूम करके आ जाना अच्छे से. लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तो होता है. अभी भी ये जो हमारा मॉक टेस्ट मंडल है ये हमारा जनरल एग्रीकल्चर के लिए है और सीयूटी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. तो हमारे जो हाईली क्वालिफाइड मेंटर्स है उन्होंने प्रिपेयर किया है और इसकी वैलिडिटी अगर आप अभी भी लेते हो तो आपके जो ICRPG एग्जामिनेशन है उसमें भी हेल्प करेगा. ओके. Okay, I would like to say that if any person or any individual, अगर किसी को कोई दिक्कत है ना, so you can do one thing, you can mail to NTA and you can ask them to change your city. Okay, you can still ask them now. You can take the mail. I will try to provide that. So ऐसा हुआ है अभी कुछ दिन पहले, यूजीसी में भी हुआ है, CSIR में भी हुआ है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो, आपकी हेल्थ की दिक्कत है, you can mention your problem and you can mail them. Okay, sometime they might consider it, they do consider it sometimes, but you have to be very lucky. Okay, you have to be very lucky if they change your center. So try to mail them, they might consider it, they do sometime. Okay, I have seen that. Okay, नहीं, try to mail them ना. You will not lose anything by mailing them. You just have to mail them, just type the few words and discuss and just tell them your problem, mention your problem very specifically, and who knows, they might consider it. So primary introduction क्या होता है?
कोई बता सकता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है कि हमने कोई क्रॉप वैरायटी लाई और उसमें बिना किसी छेड़छाड़ के हमने उसको रिलीज कर दिया। वी इंट्रोड्यूस अ वैरायटी लाइक I will ask the examples from you only. So we introduce a variety and without doing any change, we started cultivating it. We released it for cultivation purpose. Okay. हाँ, सब कुछ करेंगे हम लोग अच्छे से, डोंट वरी अबाउट इट। सो प्राइमरी इंट्रोडक्शन व्हाट वी डू, वी इंट्रोड्यूस अ वैरायटी इन आवर कंट्री, ओके, एंड देन वी व्हाट वी डू, we release it for general cultivation without doing any manipulation, genetic manipulation. We release it for cultivation. So can you tell me the examples of primary introduction? Can you tell me the examples of primary introduction? हाँ, releasing without any genetic manipulation or any manipulation, any kind of manipulation. So can you tell me about the primary introduction? What do you understand by primary introduction? How I did, okay, I have already discussed it. Can you tell me the examples of primary introduction? राइस, और क्या हो सकता है? कल्याण सोनाली का? नो नो नो, इट्स नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन का एग्जांपल क्या है? कल्याण सोनाली का। नाम से ही लग रहा है इंडियन है यार। क्या है हमारा? कौन है हमारा? सोना 64 63 और क्या है हमारा? लर्मा रोहो। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है? वी इंट्रोड्यूस अ वैरायटी एंड वी डिड सम जेनेटिक मैनिपुलेशन इधर थ्रू हाइब्रिडाइजेशन और थ्रू सिलेक्शन, ओके, एंड वी रिलीज अ न्यू वैरायटी, ओके। We did some genetic manipulation either through hybridization or either selection after hybridization. We release some variety, okay. Then it is known as secondary introduction. So, okay. So example of secondary introduction is Jaya. Why Jaya is a secondary introduced variety? Because we introduced TN1 type 1 and we cross it with type 141. Then we after series of selection we release Jaya variety. Okay. Then Kalyan Sona. Then Sonalika. These are all secondary introduced variety. Okay. So this is the history of plant introduction in India. They might ask these questions in the exam, from which countries these has been introduced. So potato was introduced from South America. So there are three crops: potato, tomato, tobacco. All these three crops has been introduced from South America. Then cherries and grapes has been introduced from Afghanistan. Then groundnut is introduced from Brazil. Then coffee is introduced from Southeast Africa. Then tea, lychee and loquat, all three are introduced from China. Then from Mediterranean region, we introduced cabbage and cauliflower. Then annatto we introduced from West Indies, and mahogany is also introduced from West Indies only. Okay, so try to remember these things. These questions generally comes in the examination. Okay. और काफी इजी है, देखो ना, इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। पोटैटो, टोमेटो और टोबैको साउथ अमेरिका, ओके। देन हमारा चेरी, ग्रेप्स और ये चेरी और ग्रेप्स, ये जो हमारा कहाँ से आया हुआ है? अफगानिस्तान से आया हुआ है। ग्राउंडनट ब्राजील से आया हुआ है। ऐसे करके याद कर लो ना। ज्यादातर देख रहा हूँ, कोशिश किया कि इसको इसी तरीके से रखा जाए ताकि याद करने में भी आसानी रहे। तीन टर्म्स आते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। There are generally three terms which we discuss generally, and both three terms look similar actually, but all are different. Adaptability. What is adaptability? Adaptability is the ability of a genotype to give a stable performance even if the environment changes. Or adaptability is the ability of a genotype to give a stable performance across the environment. So adaptability talks about the ability of a genotype variety to perform well over a wide range of environment. Environment change हो बट परफॉर्मेंस जो है सो लगभग सेम रहे, यानी इन्वायरमेंट का असर उस पर कम पड़े, ओके। इसको एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी को समझो। इफ अ वैरायटी इज गिविंग 18 क्विंटल पर हेक्टेयर,
here in Delhi. So it should give nearly 17.5 or 18.5 quintal per hectare. In other regions of the country, like in Haryana, it is still giving 17.5, 18 or 18.5. So we will say this variety is very stable because this variety is less interacting with the environment. So stable variety gives more or less equal performance across the environment. So that is the stability. Then comes the acclimatization. So acclimatization is nothing the gradual adjustment of a variety or genotype in changing environment. So अगर अपने variety को दूसरे जगह पर ले जाते हो, मान लो कि हरियाणा की वैरायटी को बिहार में ले जाते हो या फिर बिहार की वैरायटी को हरियाणा में ले जाते हो, ठीक है ना, तो अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन. बट रिमेंबर वन थिंग, एडेप्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, इट इज रिलेटेड टू जीनोटाइप, इट इज जेनेटिकल चेंज और रिलेटेड टू जेनेटिक. But acclimatization is a physiological process. This has nothing to do with the genetical change. तो acclimatization के दौरान कोई genetic change नहीं होता, याद रखना. अगर आपने कोई वैरायटी लेकर के गए हो, मान लो कि दिल्ली से लेकर के आप बिहार गए हो, ठीक है ना, आपके वैरायटी में ऑलरेडी वो वेरिएशन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो अपने आप को एक्लेमेटाइज कर पाएगा, ठीक है. लेकिन एक्लेमेटाइजेशन के दौरान कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं होता है. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, देन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन. ओके, so what is reproduction? किसके थ्रू हो सकता है? एसेक्सुअली हो सकता है और सेक्सुअली हो सकता है. सेक्सुअली में क्या होगा? एसेक्सुअल में क्या हो सकता है? वेजिटेटिवली हो सकता है या फिर एपोमिक्सिस से हो सकता है. और कोई भी गैमेट फॉर कोई भी यहां पर एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, is it really necessary in asexual reproduction that gamete formation will not occur? If the gamete formation will occur, will we can we say that it is asexual reproduction? Tell me one thing, if an individual is producing gamete and still can we say that it can reproduce by asexual means? Tell me जल्दी बताओ. अगर कोई इंडिविजुअल है, जीनोटाइप है, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो हाँ कर सकता है? बिकॉज सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं. प्रोडक्शन भी होना चाहिए गैमेट का और फ्यूजन भी होना चाहिए गैमेट का. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा क्या होता है कि गैमेट प्रोड्यूस हो सकता है, बट कोई भी इंडिविजुअल हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी हमारा जाइगोट फ्यूजन ऑफ गैमेट से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. बट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ गैमीट एंड दिस गैमीट विल फ्यूज एंड प्रोड्यूस अ offspring or a zygote. Okay, this zygote will further develop into embryo. Okay, and this embryo will again grow into a plant. So सबसे पहले हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि जिसमें क्या होता है कि हमारा जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट से क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल बनते हैं. वेजिटेटिव पार्ट्स हमारे क्या हो सकते हैं? नेचुरली भी हो सकते हैं और हम लोग आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं. तो नेचुरली की बात करें तो हमारे क्या होते हैं? जो ट्यूबर्स है, ट्यूबर्स किस में होते हैं? हमारा पोटैटो में. बल्ब किस में पाया जाता है? सबको पता है, अनियन वगैरह में. ठीक, हमारा राइजोम से किस में प्रोपेगेशन होता है? जिंजर में और टर्मरिक में. और कॉम से किस में होता है? जो बंडा है या फिर जो हमारा अरबी यानी कोलोकेशिया स्पीशीज में हमारा क्या होता है? किससे होता है? हमारा कॉम से होता है. ठीक है, यहां से हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि यहाँ पर ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है. ओके, फिर हमारी जो सब एरियल स्टेम है, सब एरियल स्टेम की बात करें तो यहाँ पर मिंट स्पीसीज होंगे, देन डेट पाम होगा और हमारा स्ट्रॉबेरी, बनाना, these हमारे कहां से होते हैं? सब एरियल स्टेम से होते हैं. ठीक है, बल्बिल क्या होता है? बल्बिल हमारा क्या होता है? जो मॉडिफाइड फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, मॉडिफाइड फ्लावर होते हैं जो कि न्यू प्लांट में बन जाते हैं बिना सीड के फॉर्मेशन के. यहाँ पे कोई भी सीड नहीं बनता है बल्बिल में. जो हमारे फ्लावर है डायरेक्टली मॉडिफाइड हो जाते हैं अदर पार्ट्स में. ओके, होता कहां पर ही है बल्बिल? गार्लिक में होता है. एक बात याद रखना, बल्बिल प्रेजेंट कहां पर होता है? गार्लिक में प्रेजेंट होता है. ठीक है ना. और ये हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, जो मॉडिफाइड फ्लावर होते हैं, वो कोई किसी भी रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं. ओके, देन आर्टिफिशियली हम क्या किस स्पीशीज में करते हैं? आपको पता होगा, यू नो दैट ऑलरेडी दैट इन स्टेम कटिंग इज यूज्ड इन सुगर केन, ग्रेप्स एंड रोजेस.
Then root cutting is used in sweet potato, citrus, lemon. Then there are other methods जैसे कि layering हो गया, budding हो गया, grafting. Veneer grafting, you people know that we use in mango. Then guti, these are air layering or air layering we use in guava. Okay. Then tissue culture, you know, one of the crop. We will go fast. Tissue culture, you know, you can tell. Can you tell me one example of crop in which we used tissue culture? We use tissue culture specifically. अनियन में बल्ब होता है, अनियन में बल्ब होता है, मैंने गार्लिक का बोला था ना, अनियन में बल्ब, बल्बिल नहीं, अनियन में बल्ब. बल्बिल इज डिफरेंट थिंग, बल्बिल इज मॉडिफाइड फ्लावर. हम बनाने में भी करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक एग्जांपल है ऑर्चिड. ऑर्चिड में मेनली क्या होता है हमारा, ऑर्चिड में हमको टिश्यू कल्चर की तरफ जाना ही पड़ता है. तो रिमेंबर वन थिंग, दिस ऑर्चिड, आई थिंक आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन सम एग्जामिनेशन. ऑर्चिड में बनाना में भी करते हैं, मोस्टली करते हैं, बट हमारा मोस्टली आजकल जो स्टार्टिंग से जो करते आ रहे हैं ना, हाँ कर सकते, करने के लिए किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ऑर्चिड में हमें करना पड़ता है बिकॉज वहां पे सीड प्रोडक्शन काफी लो होता है. Then you might be knowing about apomixis. Apomixis is the condition in which seed is produced without fertilization. So asexual reproduction through apomixis is also known as asexual reproduction through seed. The asexual reproduction which is occurring through seed is known as apomixis. So there are various types of apomixis. Okay. Apo means without and mixis means sexual, without sexual reproduction the seeds are producing. That's why it is known as apomixis. Okay, can you tell me who gave the term, who discovered double fertilization? I have discussed this in my class. Who gave double fertilization or who discovered double fertilization? बनाना ने थोड़े दिया था. डबल फर्टिलाइजेशन किसने दिया था? हाँ, नेवेस्चीन. कब दिया था? 1898. And who discovered sex in the plant? Who discovered sex in the plant? Camerarius in 1694. He discovered the sex in the plant. Okay. So remember these things. These things might come in your exam. Who discovered the double fertilization and who discovered sex in the plant. Okay. So apomixis means development of seed without fertilization. Okay. And you might get confused between apomixis and parthenogenesis. Parthenogenesis comes under the apomixis. It is a type. Okay. So first we are going to discuss about this adventive embryony. In adventive embryony, there is development of embryo developed, but from where? Vegetative cells. वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ओव्यूल से बनता है और इसमें कोई भी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन नहीं होता है. एम्ब्रियो सैक का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा. पोली एम्ब्रियोनी यहां पर कॉमन होता है. और अगर बात करें पोली एम्ब्रियोनी कॉमन होता है और ये पाया कहां जाता है, एग्जांपल इसका कौन कौन सा है? एग्जांपल इसका बात करें तो सिट्रस में हो सकता है, देन मैंगो. ठीक है, वी विल गो फास्ट. तो इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो विल डेवलप बट विदाउट फर्टिलाइजेशन. एंड फ्रॉम वेयर इट विल डेवलप? इट विल डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द ओव्यूल लाइक न्यूसिलस, चलाजा एंड ऑल. एंड देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो sac. And polyembryony are common in these species also. And the examples are citrus and mango. Then gametophytic apomixis. It might happen that the vegetative cells might produce the embryo sac. Here the development of embryo sacs will occur. Embryo sac का development होगा यहाँ पर. अर्लियर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या हो रहा था, एम्ब्रियो सैक डेवलप नहीं हो रहा था, पर यहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा. एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा और क्या होगा, या तो मियोसिस पूरी तरह से क्या होगा, मियोसिस माइट बी ओमिटेड और देयर विल बी सम modified type of meiosis. Okay, so the egg cells and every other cells of the embryo sac will remain diploid.
Okay, so in apomixis, apospore, it is similar to adventive embryony, but the polyembryony is not the case here. But here the embryo sac will form. Earlier in adventive embryony, we have seen that there will be formation of embryo, but without the formation of embryo sac. Embryo sac formation will not occur. But here the embryo sac will embryo will develop. From where it will develop? Vegetative cells. With the formation of याद रखना एपोस्पोरी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एपोस्पोरी में क्या अंतर है। दो अंतर है। वहां पर पोलिम्ब्रियोनी का केस है, यहाँ पोलिम्ब्रियोनी का कोई केस नहीं है। वहां पर क्या होता था, एम्ब्रियो सैक नहीं बनता था एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में, यहाँ पर हमारा एम्ब्रियो सैक बनेगा। ओके, एग्जाम्पल से हमारा हेरेसियम, मेलस और ऑर्चिड्स में हमारा एपोस्पोरी पाया जाता है। देन कम्स द डिप्लोस्पोरी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा एम्ब्रियो सैक तो बनेगा, एम्ब्रियो सैक यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन एम्ब्रियो जो हमारा डेवलप हो रहा है ना, या तो एक सेल हो रहा है या फिर हमारा क्या से हो सकता है, सिनर्जिड से हो सकता है, या फिर कोई भी अदर सेल से हो सकता है। अगर एक सेल से होता है तो हम इनको गोनायल बोलते हैं, ठीक है ना। और आगे इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस में हमारा क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि पॉलिनेशन होगा, ना ही पॉलिनेशन होगा, ना ही पॉलिनेशन होगा और ना ही फर्टिलाइजेशन होगा। ना पॉलिनेशन होगा ना फर्टिलाइजेशन होगा, डायरेक्टली हमारा क्या होगा, सीधा सीड का डेवलपमेंट हो जाएगा। कोई भी हमारा नहीं होता है इस तरीके का, ना पॉलिनेशन होगा ना फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन हमारा सीडोगमी में क्या होता है कि पॉलिनेशन का जरूरत होता है, पॉलिनेशन विल रिक्वायर्ड, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होता हमारा एक सेल का। लेकिन ये पॉलिनेशन हो क्यों रहा है फिर, व्हाई दिस पॉलिनेशन इज अकरिंग। पॉलिनेशन इसलिए हो रहा है ताकि हमारा सेंट्रल सेल जो हमारा होगा वो फर्टिलाइजेशन होगा। हाँ, हमारा क्या होगा कि जो हमारा सेंट्रल सेल है, यानी जो पोलर न्यूक्लियाई है, दे विल फ्यूज विथ वन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ फ्रॉम your pollen, and there will be formation of endosperm. So for the development of endosperm, the pollination is necessary. Okay, then we have androgenesis. This is nothing but anther culture. You can get it that androgenesis, from male part we are developing the seeds. So from anther culture we develop some new plants. So this is known as androgenesis. Okay, then here comes the sexual reproduction. So what will happen in sexual reproduction? There will be formation of gamete. Then these gamete will fuse. And then there will be development of zygote. Okay, so इसमें क्या होगा, there will be formation of gamete, and for sexual reproduction to occur, these gametes should fuse and that will lead to the production of new individuals. So this is the case of sexual reproduction. So before discussing sexual reproduction, we have to understand a few things about the flower. So our flowers have sepal, then we have petals, then our male part, that is anthers, then we have styler for this female gametophyte and male gametophyte. Okay, so first we are going to about sepal. These protect flower in bud stage. Then there is petal, they attract the pollinators. Then there is androecium. This is the male part. Then there is gynoecium. Do you know
इसको मेल पार्ट बोलते हैं एंडोसियम को, गाइनोसियम को। और एक टर्म आता है कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर उसको बोलेंगे जिसके अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट हो। मोस्टली उनको बोला जाता है जिनके अंदर ये चारों जो हमारे पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। इफ एनी वन ऑफ देम लाइक एंड्रोसियम इज मिसिंग देन आल्सो इट इज इनकम्प्लीट फ्लावर। इफ गाइनोसियम इज मिसिंग देन इट इज आल्सो नोन एज, if any of this part is missing, either endoecium or gynoecium is missing, that is known as incomplete flower. Complete flower is also known as which type of flower? Hermaphrodite flower. Generally we do not use the term hermaphrodite in case of plants, we use the term that is bisexual flower. Okay, सो अब हम लोग देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो सबसे पहला इवेंट जो हमारा डिस्कस करने जा रहा है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो हमारे एंथर्स में क्या होते हैं? एंथर्स में देख लो, एंथर में हमारे क्या होते हैं? पोलन सेक्स होते हैं। पोलन सेक्स के अंदर हमारे पीएमसी सेल्स होते हैं। पीएमसी क्या है? डिप्लॉयड है। इसके अंदर पहला मियोटिक डिवीजन होगा और यहां से हमारा डायड कंडीशन बनेगा। देन जो हमारा मियोसिस 2, दिस इज मियोसिस 1, ये सिंगल मियोसिस इवेंट है। हमारा मियोसिस में 2 इवेंट होता है ना, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सिंगल मियोसिस के थ्रू हमारा क्या होगा? टेट्राड कंडीशन होगा। ठीक है, टेट्राड कंडीशन हुआ। इसके बाद हमारा क्या होगा? इससे हमारा पोलन ग्रेन बना। हर कोई अलग अलग पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, पोलन ग्रेन के ऊपर के लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्साइन। इंटरनल लेयर को क्या बोलते हैं? इंटाइन। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लेना। देन हमारा ये जो माइक्रोस्पोर जो बना है, माइक्रोस्पोर में कितना माइटोसिस होता है? सबसे पहला माइटोसिस होता है और ये हमारा क्या बनता है? ऊपर वाला जेनेटिव सेल न्यूक्लियस में बनता है, नीचे वाला वेजिटेटिव ट्यूब और ट्यूब न्यूक्लियाई में। लेकिन मोस्ट ऑफ द पोलन, रिमेंबर दिस थिंग, पोलन जो हमारा रिलीज होता है मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में, लगभग मोर देन 65% स्पीसीज में ये पोलन रिलीज हमारा होता है किस स्टेज में? जो हमारा जो दो न्यूक्लियस, जो हमारा डबल न्यूक्लियस स्टेज होता है ना, उसमें रिलीज होता है हमारा ये पोलन। और ये जाकर के हमारा ये फिर से डिवीजन कब करता है? जब हमारा पोलिनेशन हो जाता है तो ये जो हमारा जेनेटिव न्यूक्लियाई है वो फिर से डिवाइड करता है। और इसका एक वाला ये जो न्यूक्लियस है वो किसके साथ फ्यूज करता है? एक के साथ। और एक हमारा किसके साथ फ्यूज करता है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये फ्यूज करके हमारा क्या देता है? इंडोस्पर्म। और ये हमारा एक के साथ फ्यूज करके क्या देता है? हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन हम मेगास्पोरोजिनेसिस को देखें तो यहां पर भी हमारा जो होता है ना, एक मियोसिस से हमारा क्या बनता है? मेगास्पोर बनता है। लेकिन ये डिजेनरेट कर जाते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ऊपर वाला डिजेनरेट कर रहा है तो ऊपर वाला ही डिजेनरेट करेगा, हो सकता है नीचे वाला भी डिजेनरेट कर जाए। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। ठीक है, तो हमारा एक जो बचता है, अब एक क्या होता है? वो फर्दर क्या होता है? सीरीज ऑफ माइटोसिस डिवीजन होता है। कितने माइटोसिस डिवीजन होते हैं? याद रखो, यहाँ पर 3 माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर 3 माइटोसिस डिवीजन हो रहा है और यहां जाकर के क्या बन रहा है हमारा फाइनली? इसको बोलते हैं 8 सेल्ड, सॉरी कितने सेल है इसमें? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। क्यों 7 सेल्ड है? गिन करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। न्यूक्लियस कितना है टोटल? 8। सो इसको हम लोग बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। और ये क्या हमारा? मेगा गैमीटोफाइट है। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो हमारा क्या होगा? पहला फर्टिलाइजेशन जो होगा, जो किसके बीच में होता है? एक को करता है, एक स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा, यहां से हमारा क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। एक हमारा ट्रिपल फ्यूजन होता है, जो हमारा दूसरा वाला स्पर्म वाला आया था वो किसके साथ फ्यूज करेगा? हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। इसको ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन बिकॉज 3 न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, सो इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। What we get from that? We get endosperm, also known as primary endosperm. ठीक है, एंडोस्पर्म का क्या काम क्या है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये या तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो सकता है, जो कि लेग्यूम्स के केस में हो जाएगा, और या फिर मेजर पार्ट ऑफ सीड होता है, जो कि हमारा मेज, व्हीट या फिर कैस्टर में होता है। ओके, हाँ, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, in first fertilization it is fused with the egg cell,
Okay, in triple fusion, it is known as triple fusion. It is the part of double fertilization because here the fertilization event is occurring 2 times. That's why we call it double fertilization. And in the first fertilization event, our sperm will fuse with egg cell and it will lead to the formation of zygote. And in the second fertilization event, it is also known as triple fusion because 3 nuclei involved, 2 nuclei of polar nuclei and 1 nuclei of sperm cell, and it leads to the formation of primary endosperm nuclei or endosperm simply. Okay, the role of endosperm might be clear to all of you. So we will now discuss the mode of pollination. Okay, mode of pollination, either it can be self-pollinated, it can be cross, or it can be often cross. Okay, self-pollination, it is also known as autogamy. What happens in the autogamy? When the pollen from the anther of the same flower will land on the stigma of the same flower, it is known as self-pollination or autogamy. In cross pollination, two plants are involved. The pollen from one plant will land on the stigma of other plant. This is known as cross pollination or allogamy. There is third types. Generally, it is the case of self pollination only, but it occurs in the different flower. So pollen from one flower, will land on the stigma of another flower of the same plant. Like in the case of maize, the male inflorescence is different and female inflorescence is different. Okay, so pollen from tassel will land on the silk of the same plant. So this is known as geitonogamy. Okay, so there are some mechanism in which they promote the self pollination. The first one is cleistogamy. In cleistogamy, the flower will never open. The flower will never open, so this will lead to complete self pollination. Complete self pollination will occur here. Okay, so it found in the case of wheat, then in case of oat, then in case of barley, then in case of chasmogamy, flower will open but only after pollination. After the pollination event, the flower will open, but there might be chances that there might be left some stigma and there might be some florets which are not fertilized yet, or pollination or some dead pollen might be landed. Then also the flower have opened. But in the case of chasmogamy, there are chances that there might be chances that some level of cross pollination will occur. So कुछ level of क्रॉस पोलिनेशन भी यहाँ पर होता है चेस्मोगमी में. तो आपने देखा होगा, you people might have seen that in case of rice, the flowers open. You have seen the yellow pollen in the morning time around 8 or 10 in the field of rice. The floret खुला हुआ रहता है, उसका राइस का फ्लोरेट खुलता है. तो ये आप कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये हमारा राइस में देखने को मिलता है. कभी कभी some species of wheat we can see that. Okay, so what happens in the case of tomato and brinjal? The anther stigma are very closely placed. So if the anther and stigma, they are very close, so this will lead to the self pollination. This condition might lead to the self pollination. So you have to keep in mind. So close position of anther and stigma will lead to self pollination in case of tomato and brinjal. So this chart is very important for you people. It might be important for your state agriculture university examination. It might come in CUET PG. It might come in your JRF examination also. So try to remember that. So if the pollinating agent is wind, then it is known as anemophily. If the pollinating agent is water, it is known as hydrophily. If it is the insect, it is known as entomophily. Bird, it is known as ornithophily. In case of bat, it is known as chiropterophily. Then it is in case of snails, it is known as melacophily. In case of ants, it is known as myrmecophily. I think this ant one is came in some examination. This ant one came in some examination. I don't know in which examination, but I have seen somewhere in previous year question section. Okay, so if it occurs through the mammals, it is known as therophily, and in case of animals, it is if you talk about the animals in broad sense, then it is known as zoophily, and ophidophily, it is known as if the pollination will occur with the help of snakes, it is known as ophidophily. Okay, so
there are some mechanism which promotes this cell cross pollination also. So first one is dichotomy. Dichotomy means the flowers are either male or female. So the first one is monacy. Monacy is the condition in which a same flower, same plant will have antimony macrophylla. So these type of questions comes directly in the examination, and if you remember that, you will able to solve it. Otherwise, look, there are some questions either you know the answer and either you don't know the answer. You cannot use your brain actually. You have to do the ratification in these type of questions. You cannot do anything else. Okay, so monacy. Monaceae is found in cucurbits, walnut, strawberries. In monaceous plants, both male and female reproductive structure are found on the same plant. Like in the case of maize and grapes, cassava, all these type of plants are monaceous plants. Then dioecious, male and female plants will be different. Whether a plant will have male inflorescence or female inflorescence. Okay, so these conditions are found in papaya, date palm, and asparagus or spinach. Okay, so we will go fast from here because I don't think these type of questions will generally come, but you have to keep in your mind the terms only. Okay, so dichogamy is the condition in which your anthers and stigma both will mature at different different times. Okay, so in protogyny, the pistil will mature first and the anther will mature later. So protogyny condition is found in the pearl millet. And there is another condition known as potentry. Potentry, in what happens in the case of maize, potentry is generally found in the maize. What happens there? Your anthers will mature first, or the stamen will mature first, and your gynosium will mature later. Okay. So there might be some mechanical barrier which will also promote the cross pollination. So what will happen? So this mechanical barrier will be present on the waxy layer, will present on the stigma, and this waxy layer on stigma. So what will happen? This waxy layer will be broken if the pollinator will come and try to pollinate. Then this waxy layer will be broken by the pollinator, and this stigma will the pollen will land on the stigma with the help of pollinator. So this helps in promoting the cross pollination. There are some other combination of mechanisms which are found in maize, which show monaceae plus protentry. Okay. So self-incompatibility. Self-incompatibility is the condition where the functional pollen is not able to do the self-pollination. Even if you will use the self-pollen, it will not able to pollinate. Okay, or it will not able to fertilize. So this condition is known as self-incompatibility. That self-incompatibility is further divided into sporophytic and gametophytic. Okay, sporophytic. In sporophytic self-incompatibility, you have to keep in your mind that in sporophytic self-incompatibility, the self-incompatibility reaction is governed by the spore the pollen-producing plant, not by the genotype of the pollen. Okay, so the incompatibility reaction will be governed by the genotype of the pollen-producing plant, not by the pollen genotype. So what will happen in the case of gametophytic self-incompatibility? In gametophytic self-incompatibility, the self-incompatibility reaction will be governed by the genotype of the pollen, not by the genotype of the pollen-producing plant. So, what will happen in the male sterility? Here the pollen was functional. Pollen was functional here. Pollen is functional. But here the pollen will not be functional. पॉलन यहाँ पे फंक्शनल बिल्कुल नहीं रहेगा. ठीक है, ये हो सकता है कि पॉलन प्रोड्यूस ही ना हो. क्यों? क्योंकि एंथर का टिश्यू डिजेनरेट कर चुका है, एंथर में ढंग से पॉलन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, या फिर जो पॉलन प्रोड्यूस कर रहा है वो पॉलन डेड है. ओके, देन हम लोग आ जाते हैं जो अब देख लो, एक हमारा होता है जीनोगैमी. जीनोगैमी में क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि डिफरेंट प्लांट, सेम स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है. ठीक है ना, स्पीसीज सेम है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, उनके बीच में हो रहा है, तो हमारा क्या है? जीनोगैमी. देन हमारा होता है हर्कोगैमी. ये टर्म्स याद रखना. हर्कोगैमी में क्या होता है? अगर की पॉलिनेशन, अगर हमारा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोटिंग करने के लिए क्या हो रहा है, वैक्सी लेयर या फिर कोई मैकेनिकल बैरियर प्रेजेंट है जो कि हमारा सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्कोगैमी बोलते हैं. मैकेनिकल बैरियर अगर प्रेजेंट है तो. ओके,
देन हम आते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को डिस्कवर किया था, किसने किया था? जल्दी जल्दी चलेंगे। कोयल रियूटर 18th सेंचुरी, कौन से प्लांट में किया था? और वेस्कम फिनिकम में किया था। टर्म कौन दिया था सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी? टर्म स्टाउट ने दिया था। कब दिया था? 1917 में दिया था। होता क्या है? इनेबिलिटी ऑफ सेल पॉलन टू फर्टिलाइज आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद ही हमारा क्या होगा? वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा कंडीशन बोलते हैं हम लोग? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या हो सकता है कि पॉलन या तो जर्मिनेट नहीं करेगा स्टिग्मा पर। मान लो सबसे पहला चीज क्या हो सकता है? पॉलन लैंड किया, पॉलन विल लैंड ऑन द स्टिग्मा सरफेस, देन व्हाट विल हैपन? पॉलन विल नॉट जर्मिनेट। देन थिंक इफ दे जर्मिनेट, अगर वो जर्मिनेट कर गया, even if they will germinate, they will not able to enter the stigma. There are mechanism for that by which it will not able to penetrate the surface of stigma. So even if they will able to penetrate the surface of stigma, they will not able to enter the styler region. अगर वो इंटर कर भी गया स्टाइलर रीजन में तो ग्रोथ बहुत स्लो होगा। और मान लो ये सब भी नहीं हुआ, ग्रोथ हो भी गया, देन हमारा क्या होगा? अगर एम्ब्रियो बन भी गया तो क्या होगा? हमारा एम्ब्रियो डिजेनरेट हो जाएगा अर्ली स्टेजेस में। ओके, देन हमारा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारा हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम है और होमोमॉर्फिक सिस्टम है। ठीक है, हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम क्या है? देखो एक तरीके से मेरा एक बात ध्यान में रख लेना, कहीं भी जो हेटेरोमॉर्फिक वाला है हमारा, जिसमें हमारा जो मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, पिन एंथ्रम, उसके कारण हमारा ये नहीं हो रहा है कि मतलब पिन वाला पिन के साथ नहीं कर सकता है और थ्रम वाला थ्रम में नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर क्या है? हमारा मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है। मॉर्फोलॉजी इज जस्ट एन इंडिकेटर, it is not the prime reason because of which self incompatibility we are seeing self incompatibility. It's just an indicator. There is no role of self incompatibility in that. जीनोटाइप के कारण वो छोटा या बड़ा हो रहा है, बट उसका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में रोल नहीं है। वो गवर्न हो रहा है एसआई रिएक्शन जनरली थ्रू द एस अलील। ओके, सो ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो डाई स्टाइली हमारा में क्या होता है कि स्टाइल और स्टेमन क्या होता है? दो तरीके का होता है। ट्राई स्टाइली में क्या होगा? तीन तरीके का होगा। देन हमारा होमोमॉर्फिक में क्या होता है? स्पोरोफिटिक, अगर वो किससे गवर्न हो रहा है? ठीक है, जीनोटाइप ऑफ द पॉलन प्रोड्यूसिंग प्लांट से हो रहा है। अगर जीनोटाइप किससे हो रहा है? खुद के गैमेट से हो रहा है, गैमेट खुद ही अपना ऐसा रिएक्शन गवर्न कर रहा है, तो हमारा गैमेटोफिटिक है। genes involved can be single genes, there can be many genes involved, or there can be many two genes, one genes, or there can be many genes which are involved. Okay, so stigmatic site of expression can be stigmatic. The site of self incompatibility reaction is stigma in case of sporophytic self incompatibility, and styler region in case of gametophytic. Okay, binucleate stage in the pollen release in binucleate stage in case of gametophytic and trinucleate stage in case of sporophytic. You have to keep these things in mind. चलो एक बात अभी पूछ लेते हैं, you people are facing any problem with my English or is it fine? जैसे चल सकते हैं या फिर तुम लोग को लग रहा है कि कुछ ज्यादा हो रहा है? You are getting my points or not? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मैं ऐसे ही, या फिर थक गए? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो एक बार चैट में यस कर दो, देन हम लोग चलेंगे ऐसे ही। समझ में आ रहा है ना? और you people are facing any problem with my English? I don't think my English is that much good, but I think it's not that much bad to understand. So can we keep this in English or and Hindi both, or I should continue in Hindi only? How many people are from English? How many people are from English only? That should be enough actually.
Okay. So people are from English only. So we will continue like this. Okay. So in heteromorphic system, it is found in diastyle is found in Primulaceae family. So we have two type of flower. One is thrum, genotype is this one, and pin. So इसमें बस इतना याद रखना है. These type of crosses are incompatible. And remember one thing, if question will come that homomorphic, that is the diastyle, it is controlled gametophytically or sporophytic. So it has a sporophytic control. This is a sporophytic type. This one is a sporophytic type. Keep that in mind. Okay. These are incompatible crosses, and only compatible crosses are pin cross thrum or thrum cross pin. These are compatible. Okay, you have to keep this in mind. Okay, then there are this is homomorphic system. So there will be कोई मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होगा फ्लावर में. और यहाँ पर क्या होता है हमारा, एक तो है हमारा गैमेटोफिटिक, ऐसा रिएक्शन गवर्न किससे होता है, ऐसा रिएक्शन विल गवर्न बाय जीनोटाइप ऑफ gamete, and here the in sporophytic the SI reaction will be governed by genotype of gamete producing plant. Okay. So if the SI reaction is will governed by the genotype of the pollen producing plant, then it is known as sporophytic self-incompatibility, and if it is governed by the genotype of the gamete itself, then it is known as gametophytic self-incompatibility. We will try to see a difference between them, and from there we will get an idea about these two. Okay. So इसमें क्या होता है, अगर दोनों gametophytic में क्या होगा, if both the SI alleles are similar, then there will be incompatibility. If the SI alleles are matching at only one loci, then there will be 50% incompatibility and 50% compatibility. If both the SI alleles are not matching, then there will be 100% compatibility. But in case of sporophytic, there will be only complete compatibility or complete incompatibility. There is no partial case in sporophytic self-incompatibility. You should keep that in mind. So we will see one by one. So SI controlled by genetic constitution of pollen there, and it is constituted by the genotype of the sporophyte. Sporophyte is here gamete producing plant. So gene involves, here are S genes will multiple alleles, here also the S genes are involved. Site of action is gene action is styler region. तो यहाँ पर क्या होगा कि pollen tube का growth रुकता है. So it will able to germinate and penetrate the stigma surface. But if the reaction is incompatible type, then the pollen tube growth will be very slow and it will not able to reach the ovary. Okay, so you have to keep that in mind. So here the site of gene action is stigma, not style. It is stigma. Here the thing is, the pollen will land on the stigma surface, but it will not able to germinate itself because the stigma surface is dry in case of sporophytic, and in gametophytics it is wet. So because the stigma surface is wet, it will able to germinate and penetrate the stigma surface, and will and later it will not able to grow further. Okay, but no facing. I'm not getting what are you saying.
Okay, but in case of sporophytic, what will happen? The stigma surface will remain dry, and because of that, it will not able to germinate. The germination will only occur if the reaction is compatible type. Then the stigma will get wet through a series of reaction. Okay, okay. So it will not able to germinate. Okay, because of dryness of the stigma. It is only codominance type of interaction. It has dominance, or it might be codominance or any other interaction. So pollen will release in binucleate. Here it will release in trinucleate. Here we will not see the reciprocal difference, because you will observe the codominance in case of gametophytic system. Here you can see the dominance in stigma and codominance in case of pollen or sporophyte, or if you can observe the dominance in case of pollen and codominance in case of stigma. So because of that, you can see the reciprocal difference. So there is recovery of male parent only in case of gametophyte, and both male and female parent in case of sporophytic. Okay, so there are few differences. The important ones are the stage of release of this pollen structure when they released. Then the site of gene action is important. Then type of crosses are important, and recovery one is important. Okay. So these things are important. You have to keep these things in mind. These things might come in your examination. So what? Look, in CUET, mostly the questions are come factually. Okay, they do not ask a very conceptual type of questions in plant breeding. So for examination point of view, you have to keep things in your mind. And few of you people might be knowing these facts already. So don't worry about it. If you are facing any problem, actually due to network issue, their messages are likely delay, not synchronization in. Okay, no problem. But if you are facing any problem with, and if you need any conceptual clarity with any of the topic, you can tell me directly. I will do that. No problem. Okay. So now we will discuss the male sterility. The basic topics or initial topics are very important, because the question can be framed from these topics only. There are rare chances that they will ask questions from breeding methods and topics like that. Okay, we will discuss it. Don't worry about it. But we will discuss the initial topic. Okay, but I would like to go fast now. Okay, because we have to discuss so many of the topic, and it is not possible to discuss each and every topic in detail. It will nearly take 4 and 5 hours, and it is not just about me. You people also do not have. Okay, I will go slightly slow. I am going too much fast. Tell me, am I going too much fast? क्या मैं बहुत तेज चल रहा हूँ क्या? Okay, so in male sterility, what happens is that your pollen is not functional. There might be many reasons for that. One reason is pollen might be not functional. There are other reasons too. Other reasons are that in male sterility, first I'm going to talk about what is male sterility. In male sterility, pollen is not functional. There might be other reason of that. In some plants, what will happen? The anther will anther tissues or internal tissue of anther will degenerate. Because of that, the microspore mother cell will degenerate and will not able to form microspore. It might happen that the pollen will produce, but anther will not burst. And if the anther will not burst, it will not able to the pollen will not come out, and it will not able to pollinate. This is also the case of male sterility. Okay, and the pollen will come out, but it will not be the functional one. So that will also lead to male sterility. But in some plant, what happens is that there will be only female type of flower, that is known as pistillate condition, found mainly in the castor. So that is also the case of I think male sterility. Okay, so genetic male sterility, the gene governing male sterility कहाँ पर प्रेजेंट है? It is present in nucleus generally. And why? By which method it arose? It arises by spontaneous mutation in MS allele. So it is generally recessive and arises through
spontaneous mutation. Because of spontaneous mutation, this MS allele became this one, and this is the region or sterility. So where it is present, when gene for controlling male sterility, if it is present in the nucleus of individual, then it is known as genetic male sterility. And genetic male sterility, the A line, the male sterile line, A line have genotype small ms, and the maintainer B line, the maintainer we use only is heterozygous, because if you will use a homozygous dominant maintainer, then you will not able to produce the male sterile line. You will only get the male fertile heterozygous male fertile line. Okay, so we use heterozygous male fertile line, and when you will cross both of them, you will get 1:1 ratio. You will get male sterile, this is male sterile, and this is male fertile. So this one can be again used as maintainer, and this will be used as a seed parent in seed production. Okay, so keep that in mind. So then the genetic male sterility is further divided into environment sensitive genetic male sterility and environment insensitive genetic male sterility. The one we have just seen now, it is an environment insensitive one. Now we are going to look at the environment sensitive one. So environment sensitive one here is TGMS, that is temperature sensitive genetic male sterility. So in that we have taken an example from PEAI 64S. So in what will happen at higher temperature, it will behave like a male sterile plant, and at lower temperature, it will be male fertile. So above 23.5 degree, it will be sterile, and it will be fully fertile below 23 degree. Okay. So then again we have to see about photosensitive genetic male sterility. So if your temperature will be in critical range, that is 23 to 29 degrees Celsius. Okay, temperature is the important factor here also. So temperature should be in critical range, that is between 23 to 29 degrees Celsius. So in longer day condition, that is more than 13 hour 45 minutes of light duration, it will be completely male sterile. And if your temperature is, day length is less than 13 hour 45 minutes, it will behave as a normal male fertile plant. So but temperature should be in critical range only. If your temperature is again very high, it will again be male sterile, and if temperature will be very low, it will behave as a male fertile. Okay, so photo period will not have any role if your temperature is not within the critical range. Okay, keep that in mind. सर प्लीज हिंदी में ये वाला नहीं समझ में आया क्या? सो देखो TGMS में क्या होगा, हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी में, is it so fast? We have to go fast, you know, we do not have any choice, because it's already been 2 hours and we have only finished half of the topic, so we have to complete it. No, don't worry, I will go slow. Okay, so what will happen in TGMS? So in TGMS your what will happen, जो हमारा टेम्परेचर होगा अगर ज्यादा होगा 23.5 डिग्री से ज्यादा होगा तो मेल स्टेराइल होगा, और अगर 21 से 23 डिग्री या उससे कम होगा तो हमारा मेल फर्टाइल होगा। अब पीजीएमएस में क्या होता है कि टेम्परेचर क्रिटिकल रेंज में रहना चाहिए, 23 टू 29 डिग्री सेल्सियस हमारा क्रिटिकल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। अगर इतना क्रिटिकल रेंज में टेम्परेचर है तो अगर डे लेंथ अगर हमारा क्या होगा, लॉन्ग डे कंडीशन होगा तो स्टेराइल होगा, और शॉर्ट डे कंडीशन होगा तो फर्टाइल होगा। ठीक है, देन हमारा है कि ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम में, ओके सर राइट एंड टेल अगेन इन शॉर्ट एंड फास्ट। ओके, in Barnes Buster system we have our A line is like A line is Barnes bar. So Barnes is Barnes and Bast are both has been taken from Bacillus amyloliquefaciens, and bar gene code for you know resistance to herbicide
phosphinothricine. It is also known as PPT, phosphinothricine. Okay, this is a herbicide from which it provides resistance against. Okay, it is derived from Streptomyces hygroscopicus. So our A line will be linked, Barnes will be linked to bar gene. So Barnes is often linked to a TA29 promoter. It is taken from TA29 promoter is taken from tobacco. So अगर TA29 promoter होगा तो उसका जो होगा हमारा बार्नेस का जो आरएनएज एक्टिविटी है वो सिर्फ टेप्टम तक ही सीमित रहेगा, वो सिर्फ टेप्टम लेयर को ही डिग्रेड करेगा. So when Barnes will be linked with bar, so it will provide resistance against herbicide also. So Barnes will cause the male sterility and bar will provide the herbicide resistance. So क्या होगा यहां से अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो एक तो हमारा बार्नेस बार आ जाएगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, मेल फर्टाइल होगा. इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, फॉस्फिनोथ्रिसिन का जब हम लोग स्प्रे करेंगे, पीपीटी का स्प्रे करेंगे, इसके अंदर जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है तो ये बच जाएगा और ये वाला क्या होगा, मर जाएगा. ठीक है. हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, बार्नेस बार को क्रॉस कराते हैं बार स्टार से. वहां पर क्या होता है, बार स्टार क्या करता है कि जो इसका आरएनएज एक्टिविटी है, द आरएनएज एक्टिविटी को क्या करेगा, उसको हटा देगा, उसको डाउन रेगुलेट कर देगा. उसके कारण क्या होगा, हमारा फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगा. दिस इज द केस ऑफ बार्नेस बास्टर सिस्टम. Then there is cytoplasmic genetic male sterility. I wanted to discuss CMS, but CMS is not commercially used and it will not ask in the examination. The question will generally come from 3-line system. Here we have A line. This is fertile. This is our B line. It is our A line. So it is a 3-line system. Here the fertility gene for controlling male sterility is found in cytoplasm, that is the plasma genes. Okay, and here it is known as cytoplasmic genetic male sterility because the genes for restoring the fertility, it is found in the nucleus, and genes for controlling the male sterility, it is found in the cytoplasm. It is known as restorer, R line. It might be sterile or it might be fertile, doesn't matter. So when you will cross with your A line with B line, this is known as maintenance of or seed production of A line. So you will get seed of A line. Okay, and if you will cross with your A line with R line, this is used in hybrid seed production. This is F1 hybrid. So in CGMS, it is also known as 3-line system because 3 lines are used, A line, B line and R line. You can see all 3 lines. So if you will cross with A line with B line, there you will get the seed of A line only. So this is known as maintenance of A line. And if you will cross your A line with R line, this is known as hybrid seed production. And you will harvest your seed from A line only and you will get F1 hybrid. Okay. This is the case of CGMS. और अगर यहाँ से R line को हटा दो, एक बात बताओ, बस R line को हटा दो. If you will remove the R line, then you will get a system that is known as cytoplasmic male sterility. But जो cytoplasmic male sterility से जो हम लोग F1 बनाते हैं, वो completely sterile होता है. तो लोग हम लोग mainly CMS को यूज करते हैं vegetatively propagated crop में, जहां पर हमारा सीड कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए नहीं है, या फिर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में CMS को यूज करते हैं. लेकिन जहां पर हमारा F1 या फिर जो F1 सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, या फिर जहां पर सीड कमर्शियल पार्ट है, वहां पर हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हम लोग 3-line सिस्टम दैट इज CGMS यूज करते हैं. ठीक है. Then now we will move to the qualitative and quantitative character. So Mendel, the characters on which Mendel worked was qualitative characters, and it was showing discontinuous variation, and these characteristic or their phenotype can be grouped into distinct classes. But later when you will
suggested the idea or gave the idea of multiple factor hypothesis, and when the Nielsen Hale in 1909 experimentally proved the multiple factor hypothesis, then the continuous variation came into existence. That continuous variation is heritable in nature too. Okay, so continuous variation भी heritable हो सकता है, और continuous variation आ किसके वजह से रहा है, तो आ रहा है मल्टीपल जीन्स के कारण, पॉली जीन्स इन्वॉल्व है इसके कारण। सो हम लोग डिफरेंस देखेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। तो ये हमारा बहुत सारे जीन से वन और फ्यू जीन से कवर होता है, हमारे बहुत सारे जीन से कवर होता है। ठीक है, हर जीन का इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, काफी बड़ा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर जीन्स। यहाँ पर हर जीन का इफेक्ट काफी स्मॉल और एडिटिव इन नेचर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग माइनर जीन्स। हर जीन को माइनर बोलते हैं। टेट को वहां पर डिस्टिंक्ट क्लासेस में बांट सकते हैं, यहाँ पर कोई क्लियर कट क्लास नहीं हो सकता होता है, यहाँ पर बहुत लेस इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट से, यहाँ पर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है ना, उसमें रेशियो वगैरह यूज कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियर कट मेंडल रेशियो यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे फ्लावर कलर है, सीड शेप है, प्लांट हाइट, इसमें क्या है जो हमारा क्वांटिटेटिव टाइप का नेचर है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, देन सिलेक्शन वहां पे इजी और इफेक्टिव है, यहाँ पे सिलेक्शन क्या है, काफी डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो जो हमारा फिनोटाइप है वो जीनोटाइप की वजह से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें पता नहीं चलता है। उसके लिए हमें इन्वायरमेंट वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है, टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस से डिडक्ट करना पड़ता है, देन हमें पता चलता है कि प्रपोर्शन ऑफ जो फिनोटिपिक वेरिएंस जो हमको मिल रहा है वो जीनोटाइप की वजह से कितना है। तो हमारे बहुत सारा स्टैटिस्टिकल टूल्स इसमें यूज करना पड़ता है, जैसे कि मीन, वेरिएंस, ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल वगैरह हमको यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, जो हमारा किसके लिए होता है, हमारा ये हमारा क्वालिटेटिव जेनेटिक स्टडी के लिए यूज होता है, हम इसके में हम बायोमेट्रिकल टेक्निक्स वगैरह को यूज करते हैं। आई थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं ब्रीडिंग मेथड पर। ठीक है, मुझे लगता है ज्यादातर लोग ब्रीडिंग मेथड का वेट कर रहे थे। तो ब्रीडिंग मेथड जो हमारे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज होते हैं, मेनली हमारा क्या होता है यहाँ पर क्या यूज होता है कि हम लोग सिंगल प्लांट को देखते हैं और इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन के प्रति हमारा ज्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ज्यादा ध्यान क्या होता है, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन में। तो एक बात ध्यान में रखो, सीयूटी में ज्यादा डिटेल में नहीं आने वाला है। एक बात याद रखना कि प्योर लाइन सिलेक्शन कौन दिया था, बताओ प्योर लाइन सिलेक्शन किसने दिया था, हु गेव द आइडिया अबाउट प्योर लाइन सिलेक्शन, जल्दी 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 टेल मी, हु गेव द आइडिया अबाउट प्योर लाइन सिलेक्शन। Who gave the idea about pure line selection? You people are running late, I think. Wilhelm Johansen in 1903 gave the idea of pure line selection while working with French bean. ठीक है, प्योर लाइन सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल प्योर लाइन क्या होता है, सिंगल प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस प्लांट जो होता है वो उसको हम लोग प्योर लाइन बोलते हैं। देन हमारा क्या होता है, यूज कर सकते हैं मास सिलेक्शन, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्योर लाइन वेराइटी के लिए यूज करते हैं। देन हमारा पेडिग्री मेथड है, पेडिग्री मेथड क्या करते हैं, दो प्योर लाइन को लेते हैं, उनके क्रॉस करते हैं, फिर F2 से इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करते करते लास्ट में हम एक बढ़िया सा प्योर लाइन रिलीज करते हैं। ठीक है, बल्क मेथड याद रखना, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हमारा बल्क मेथड याद रखना, इसको इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा एक बात याद रखना, इफेक्ट ऑफ सेल्फिंग, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ए होमोजाइगस का फ्रीक्वेंसी देखने के लिए हमारा जो है सो ये फॉर्मूला है, और ये हमारा किसके लिए है, हमारा ये ए होमोजाइगस के लिए, जो स्मॉल वाले है उसके लिए ये है। एक एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में आए तो इन फॉर्मूला को यूज करके आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। ओके, आपको इन्हें याद ही करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस। Then pure line selection, as I already discussed, in pure line selection you select a individual, you select the progeny of individual plants, okay, and a base progeny is released at a variety. Mass selection is generally used for purification of pure lines, okay, and all varieties, okay. Then there is progeny selection. What is progeny selection? Progeny selection was, who gave the term progeny selection or idea about progeny selection? Wilmorin
gave the idea of 1856 in sugar beet. Wilmery gave the idea about progeny selection. What is progeny selection? The genetic worth of a plant or the worth of an individual is, tell me what it is. So the progeny selection, you people are running very late. You people are running very late. So in progeny selection, अगर हम किसी individual का worth पता करते हैं, the worth of an individual is assessed by the performance of its progeny. Then it is known as progeny test. So what we do in progeny test, we grow the progeny rows, and from the performance of the progeny, we assess the value of its parents. Okay. Then the pedigree method. Pedigree method was given by H.H. Lowe in 1927. In pure line varieties or in self-pollinated crops, it is used to transfer some qualitative or quantitative. It is mainly used to transfer quantitative trait. But remember, when the trait heritability is too much low, we cannot use a pedigree method, because the individual plant selection we start in F2 or F3 actually. So the genes are still segregating, and the effect of environment at that time on the trait is very high. So for less heritable trait, we cannot use pedigree selection. Okay. But it can be used in both self and cross-pollinated crops. In cross-pollinated crops, we generally use it for releasing or for developing of good inbreed that can be used in development of hybrid. Okay. Then bulk and single seed descent method, both are actually, no, I cannot say both are same. Bulk breeding method was given by Nielsen Ehle in 1908. Bulk method was given by Nielsen Ehle in 1908, and the single seed descent method was given by Goulden in 1939. Only this much is important for you. For detailed process, there are general agriculture lectures available. But for this method, for this much information is, I think, enough for you all. Okay. Hello. So, and bulk and breeding method, it is also known as evolutionary method of plant breeding. What in bulk breeding method, up to F5 or F6, you keep your plant under the natural selection. Then from F7 or later generation, you start doing artificial selection. Then in single seed descent method, what you do, up to F5 or F6 or in every generation, what you do, you collect the single seed from each and every plant, and you proceed by that only. So in next generation, you grow only single seed, and then again for next generation, you collect the single seed from each plant. So maximum diversity is captured. And also you advance, you reach homozygosity earlier in single seed descent method. Okay. Because you can grow your materials are very less, so you can grow it in greenhouse or glass house or any other places like that, and you can use off-season nursery to advance your generation. So you can advance your generation in 2 to 3 times a year. Okay. Then backcross method is the most appropriate question I would like to ask. What is the need of backcross? Why we do backcross, and what is the relevance of backcross? So the relevance of backcross is to maximum recurrent parent genome recovery. It is not generally used to transfer you cannot say the backcross is used to transfer a gene. Okay. So when you will cross a two parent, let's say homozygous recessive and heterozygous homozygous recessive and homozygous dominant, if you will cross these two plants, the gene has been transferred in F1 itself only. Now, so why you will back cross that F1 with your recurrent parent, let's say dominant homozygous in that case. We are doing back cross just because you want to get the maximum recurrent parent genome recovery. Okay. So back cross is used for maximum recurrent parent genome recovery. And in layman terms, you can say that it is used to transfer a single oligogenics or oligogenic characters. Okay. Then mass selection is based on phenotype only. Okay. So in cross-pollinated crops, we do mass selection. Mass selection is, the cycle is one generation for 1 year only. You go in the field, you select plants on the basis of their phenotype. You allowed it for open pollinate, then collect the seed in the bulk, then again raise the next generation. This is mass selection. Then there is recurrent selection. Recurrent selection is, it is called a selection, generation after generation, and intermating of
selection, generation after selection, and intermating of the selects. So idea about recurrent selection was given by Hayes and Garman in 1939 and East and Jones in 1920. Okay. So, but the term recurrent selection was given by Hull, okay, in 1945. Recurrent selection are of many times. Simple recurrent selection. Then there are simple recurrent selection is based on phenotype only. Then recurrent selection for GCA. You just have to keep in mind that in the these type of questions will not come in detail. They are not going to ask you the detailed procedure. Just remember these things. In recurrent selection for GCA, the tester uses wide genetic based tester we use. And in recurrent selection for SCA, the tester we are going to use have narrow genetic base. And if they are going to ask you when we are reciprocal, okay, when they will ask you when you have given a two population, you have to improve this, improve the two populations simultaneously. Then which method you are going to use? Then you are going to use reciprocal recurrent selection and reciprocal improvement of two population simultaneously. Okay. So recurrent selection for GCA it was given by Jennings. Recurrent selection for SCA was given by Hull, and reciprocal recurrent selection was given by Comstock et al. So you have to keep these things in mind. Okay. Then we are going to talk about heterosis and hybrid vigor. The term heterosis was given by Searle in 1914. So it is the superiority of F1 hybrid or F1 over both of its parents. So this is known as heterosis. So there are some difference between heterosis and inbreeding depression. It is due to the outbreeding, and inbreeding depression, no, it is not due to the inbreeding. It is due to the inbreeding only. So if you will do the selfing or inbreeding in case of cross-pollinated crops, you will start losing your vigor because the homozygous recessive allele will, recessive allele will come into the homozygous state and it will start expressing itself. Okay, so the heterozygosity will increase in case of heterosis, and inbreeding it will decrease. And it is common in cross-pollinated crops, and it is also common in cross-pollinated crops. It will lead to increase in vigor, and it will lead to decrease in vigor. So the measurements are how will you measure? So decline in F1 to F2. In F2, in F1, if you will do the selfing, it will lose its vigor in F2 and later generation. So it is measured over mid parent, better parent, and standard variety. Okay, so it can be easily fixed, but it is in case of that, harmful recessive gene get fixed, because fixed simply means it can be propagated into later generation. Okay. The reason for that is the dominant gene masks the recessive gene, and here recessive harmful gene get expressed. Okay. So we will get idea about the average heterosis, how it is calculated. If they will ask you the formula, average heterosis is F1 minus mid parent by mid parent into 100. Then there is heterobeltiosis. It is also known as better parent heterosis. It is F1 minus better parent divided by better parent into 100. Then there is standard heterosis. Standard heterosis, it is calculated over a standard Czech variety or any other variety which is highly, it is generally grown in that area with terms of that, with it have some good characteristic for which you are doing the testing. Okay, so it is F1 minus standard variety या फिर standard Czech by standard Czech
into 100. So you can calculate your heterosis through that formula. Okay. Then there are two terms, heterosis and luxuriance. So heterosis is overall superiority in terms of vigor. Okay. So it is generally give you better yield. F1 will give you better yield. Then another term is luxuriance. So it is the superiority of F1 hybrid in terms of your in terms of your vegetative growth only. So heterosis is the genetic phenomena which leads to hybrid vigor, but luxuriance, it is generally due to the influence of environment. So heterosis is a genetic phenomena which leads to hybrid vigor, and luxuriance is entirely due to the environment. So think like that, heterosis is due to the genetics that dominant allele is masking the effect of recessive allele. But think like that, if you will give the higher nitrogen dose, what will it do? It will increase the vegetative growth of the plant. Your plant will have better vegetative growth. So it is entirely due to the environment. There is no genetic reason behind the luxuriance. So if someone will ask you that in the heterosis and the luxuriance will be same in the vegetative in case of forage crop, so you will say no, heterosis and luxuriance are not same in even in the forage crops, because heterosis is a genetical phenomena which leads to hybrid vigor, but luxuriance is entirely controlled by the environment. So we are going to talk about hybrids now. Hybrids is F1 progeny between two genetically distinct pure parents. So parents should be pure in the sense it should be homozygous. So then their cross, and they should be genetically distinct. Then the cross will be the F1 hybrid resulted from that cross will be called hybrid. So then there are single cross hybrid. So there are two inverts are involved. Then it is called single cross hybrid, and total number of cross formula is n minus 1 divided by 2. Then there are double cross hybrid. So total number of double cross hybrid will be n minus 1, n minus 2, n minus 3 divided by 8. You have to keep in your mind, you should remember this formula because questions might be based on that. So 3-way cross, the formula will be n minus 1, n minus 2 divided by 2 only. Then there are modified single cross, so in which these I1 and I1 dash are sister lines. Sister lines are genetically different, but they have been developed through the same crosses. Okay. So they have crossed two parents, they have developed the F1. In F2 they have done this single plant selection from different single plant. I1 was developed and another different single plant I1 dash was developed. So these are some crosses, you have to keep this in mind. Okay, so we are now going to talk about synthetic variety. Synthetic variety are you can say the varieties developed through intermating of good lines having good general combining ability. Okay, and what will we do? We select the inbreeds. What will we do? We do the selection of inbreed. Then we will do the evaluation of GCA. For GCA, we will do the inbreed into OPV, and the inbreeds who are giving better GCA. हिंदी में ओके, सो इंडिविजुअल जिनके जीसीए बढ़िया होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, मेट करेंगे, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में मेट करेंगे, और उससे हमको जो F1 आएगा उस F1 को जो हम लोग क्या बोलते हैं, F1 को क्या बोलते हैं, sin1 बोलते हैं. ठीक है, और जो इनबिट्स का आइसोलेशन, जो इनबिट्स का हमने किया इवैल्यूएशन जो बढ़िया होगा, और पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, sin0 बोलते हैं. ठीक है, फिर इस sin1 का हम लोग क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे. sin1 से हम लोग sin2 बनाएंगे. सिंथेटिक जो हमारा F1 से जो हम लोग ने सेल्फिंग करके जो sin2 बनाया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, फार्मर्स के लिए रिलीज कर देंगे. ओके, देन हमारा है कंपोजिट. कंपोजिट इंटायरली डिफरेंट हमारा सिंथेटिक से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई भी जीसीए टेस्ट नहीं करते हैं. हमारा क्या होता है, जो सुपीरियर होता है, कैसा सुपीरियर होता है, फिनोटिपिकली सुपीरियर को लेते हैं हम लोग.
फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट्स को हम लोग लेंगे, देन उसको क्या करेंगे, इंटरमेट करेंगे, और जो क्रॉसेस, जो F1 क्रॉसेस हमारा क्या होगा, अच्छा देगा, F1 F2 बढ़िया देगा, इवेल्युएशन करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है ना। उसी इनबिट को लेकर के सीड को मिक्स करके रिलीज कर देंगे। देन हमारा इडियोटाइप ब्रीडिंग है। टर्म इडियोटाइप ब्रीडिंग को इसने दिया था, हमारा जो डोनाल्ड है उन्होंने दिया था 1968 के लिए। कौन से क्रॉप के लिए दिया था उन्होंने, व्हीट के लिए दिया था। ओके, ये बात ध्यान में रखनी है। और किसने दिया था, सीएम डोनाल्ड ने दिया था। और होता क्या है हमारा कि मॉडल प्लांट टाइप होता है जो विच इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेटर इन ए स्पेसिफिक सेट ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, देन हमारा अदर लिस्ट है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि सीएम जो हमारा डोनाल्ड है उसने दिया था 1968 में दिया था, उन्होंने हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म भी दिया था, रिलेटेड था इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। देन हमारा व्हीट के लिए कौन से क्रॉप पर दिया था, व्हीट के लिए दिया था। देन पॉलीपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे क्रॉप इंप्रूवमेंट में। पॉलीपोलाइडी की बात करें कि हमारा अगर जीनोम का सेट अगर एक से ज्यादा सेट में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग पॉलीपोलाइडी बोलते हैं, ठीक है। पॉलीपोलाइडी में ऑटो पॉलीपोलाइडी का भी रोल है, एलो पॉलीपोलाइडी का रोल है। और ऑटो पॉलीपोलाइडी में क्या बात करें तो हमारा सिमिलर सेट ऑफ जीनोम अगर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी मान लो ये हमारा एक्स जो है सो बार बार रिलीज हो रहा है, x1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो पॉलीपोलाइड बोलते हैं। ऑटो पॉलीपोलाइड में ट्रिप्लाइड का हम एग्जांपल देखें तो बनाना है, एप्पल है, वाटरमेलन है। टेट्राप्लाइड का देखें तो पोटैटो वगैरह है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया ऑटो पॉलीपोलाइड। ऑटो पॉलीपोलाइड में क्या होता है कि हमारे जो ट्रिप्लाइड वगैरह होते हैं वो काफी क्या होते हैं, स्टेरिलिटी वगैरह शो करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा देख सकते हैं कि हमारा जो पॉलीपोलाइडी ब्रीडिंग में देखें अगर, तो हमारा जो एलो पॉलीपोलाइडी होता है कि हमारा डिफरेंट सेट ऑफ जीनोम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेट ऑफ जीनोम इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि अलग अलग स्पीसीज से आए हुए रहते हैं, ठीक है। तो हमारा वीट का अगर देखें तो टिटकम मोनोकोकम और टिटकम स्पेल्टोइडिस के बीच में क्रॉस हुआ, देन हमारा क्रोमोसोमल डबलिंग होकर के हमने टिटकम टर्जिडम बना, देन टिटकम टर्जिडम का क्रॉस जब हमारा टॉची से हुआ तब हमारा टिटकम एस्टिवम बना। सेम हमारा ये ब्रासिका ट्रायंगल है, किसने दिया था, नागाहारुयू ने दिया था। ये हमारा नागाहारुयू ने दिया था, और कब दिया था, 1935 में दिया था। तो यहां से क्वेश्चन बस इतना इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ब्रासिका ट्रायंगल दिया किसने था। ओके, बस इतना ध्यान रखना है। देन हमारा डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो हमारा ये देखना है कि डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि इंटरजेनेरिक या फिर हम इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराते हैं, इंटरजेनेरिक या इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है कि उस केस में हम क्या बोलते हैं कि डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन हम लोग जब इंटरजेनेरिक और इंटर स्पेसिफिक, जैसे कि हम इंटर स्पेसिफिक क्रॉस की बात करें या फिर इंटरजेनेरिक क्रॉस की बात करें, तो हमारा रेफेनोब्रासिका या फिर जो ट्रिटिकेल बनाया था वो क्या था, हमारा डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमने बनाया था। लेकिन जब हम लोग डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाते हैं ना तो मैक्सिमम हमें कुछ चीजों का सामना करना करता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ बैरियर्स आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन बैरियर एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर। प्री फर्टिलाइजेशन बैरियर में क्या हो सकता है कि हमारा पॉलन ट्यूब हो, उसका जो है सो मतलब पॉलन ट्यूब का साइज अलग अलग हो, ग्रोथ ढंग से ना हो पाए, या तो पॉलिनेशन करने के बाद क्या हो, जर्मिनेशन ना हो, ठीक है। अब या फिर पेनिट्रेट ना कर पाए, या फिर वही हो सकता है कि पॉलन ट्यूब का साइज और जो हमारा जो स्टाइलर रीजन का साइज है वो मिसमैच कर जाए तो ओवरी तक पहुंच नहीं पाएगा। दे हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर में क्या है कि हमारा फर्टिलाइजेशन तो हो गया लेकिन हमारा क्या होगा, एम्ब्रियो एबॉर्ट कर जाएगा, जाइगोट जो है सो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, इंडोस्पर्म का डेवलप नहीं हो पाएगा, इसके कारण भी हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। देन हमारा है डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस की हम लोग बात करें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है। इसमें क्या होता है, हमारा सिंगल या फिर फ्यू जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये किसके लिए होता है, कुछ स्पेसिफिक रेस के अगेंस्ट के लिए ही होता है, रेस के अगेंस्ट काम करता है, ठीक होता है। ये हमारा क्या होता है, लेस ड्यूरेबल होता है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा होता है ना कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑल द रेसेस ऑफ द पैथोजन देता है, और ये हमारा क्या होता है, ड्यूरेबल इन नेचर होता है, and it is controlled by many genes.
यहाँ पर हर जीन्स का इफेक्ट क्या होता है, मेजर जीन्स इनको बोलते हैं, क्योंकि हर जीन का इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा ह्यूज होता है। यहाँ पर क्या होता है, हर जीन का इफेक्ट क्या होता है, माइनर होता है। ये पर पॉलीजेनिक कंट्रोल है। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं एच फ्लोर ने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दिया था। बस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 1942 में जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दिया था। ये बात आपको जो है सो याद रखना है, ठीक है। देन हमारा कैसे कैसे हो सकता है, या तो जो हमारा स्टेब्लिशमेंट करने से रोक सकता है, या फिर ग्रोथ से रोक सकता है, या फिर हमारा टॉलरेंस है कि प्लांट को जब डीज हो भी गया है या फिर कुछ हद तक डीज हो भी गया है तो भी हमारा प्लांट क्या होगा, सर्वाइव करेगा उस केस में। ओके, देन इंसेक्ट रेजिस्टेंस का जो मैकेनिज्म है वो दिया था आर एच मिंटर ने 1951 में। क्या था, नॉन प्रिफरेंस था कि हमारे प्लांट्स में कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज होंगे जैसे कि हमारा क्या हो सकता है कि मेनली हमारा अगर टेस्ट पसंद नहीं हो जाए, बिटर इन टेस्ट हो, या फिर कुछ सब्सटेंसेस जैसा प्रोड्यूस करे जो इससे हमारा क्या होगा, वो प्रीफर ही ना करे उस प्लांट पर फीड करने से। ओके, देन हमारा क्या था, एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस में क्या होता था हमारा कि अगर प्लांट ने प्लांट पर फीड कर लिया वैसे प्लांट पर, तो प्लांट के अंदर कुछ केमिकल्स होंगे या फिर कुछ मेटाबोलाइट्स होंगे जो हमारा क्या करेगा, उसके रिप्रोडक्शन को, उसकी ग्रोथ को क्या करेगा, हाईली उसको क्या करेगा, रिप्रेस करेगा या फिर सप्रेस करेगा उसके ग्रोथ को। देन हमारा क्या होता है, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ हद तक डैमेज हो भी गया प्लांट को तो उससे वो क्या करेगा, रिकवर कर लेगा उस अपने आप को। देन हमारा होता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब सिंपल सा होता है, ये कोई जेनेटिक नहीं है। अवॉइडेंस इज नॉट रिलेटेड टू जेनेटिक ऑफ द प्लांट। अवॉइडेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि इंसेक्ट के अटैक के सीजन से पहले ही अपना ग्रोथ को कंप्लीट कर लेना। देन हमारा ड्राउट रेजिस्टेंस की बात करें तो ड्राउट रेजिस्टेंस में मेनली हमारा 3 मैकेनिज्म है। पहली बात है ड्राउट एस्केप। ड्राउट एस्केप का सिंपल सा मतलब ये है कि अपना प्लांट जो है सो लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा जो ड्राउट आने से पहले ही, यानी उनका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसको ड्राउट आने से पहले ही कंप्लीट कर लेगा। देन हमारा है ड्राउट का अवॉइडेंस। अवॉइडेंस से मतलब क्या होता है कि इंटरनल जो होता है ना, फेवरेबल वाटर बैलेंस बना करके रखेगा। फेवरेबल वाटर बैलेंस बना, टिश्यू वाटर बैलेंस बना करके रखेगा ड्राउट आने के से पहले ही। देन हमारा होता है ड्राउट टॉलरेंस, ठीक है ना, जो अंदर के प्लांट के अंदर भी अगर वाटर अगर कम भी है, ठीक है, प्लांट अगर लो टिश्यू वाटर कंडीशन भी है तो भी अपने आप को क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। और ड्राउट रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो ये सारे का मिला करके अगर सारा मैकेनिज्म और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म के थ्रू हमारा ड्राउट रेजिस्टेंस आता है। देन हम आप बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, मोलिकुलर ब्रीडिंग। मोलिकुलर ब्रीडिंग में क्या होता है, या फिर मोलिकुलर मार्कर के थ्रू जो हम लोग ब्रीडिंग करते हैं। मोलिकुलर ऐसा ट्रेड, कोई भी अगर डेफिनेशन बाय जाए तो एनी ट्रेड दैट इज पॉलीमॉर्फिक, इजी एंड रिलायबली आइडेंटिफाइड एंड रेडियली फॉलोड इन सेग्रीगेशन इन जनरेशन। ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन में मिला और नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर ना हो, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी होना चाहिए और बिना सेग्रीगेशन के थ्रू ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है ना। और जो क्या हो, हमारे जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल को शो करे, वो हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर या फिर जेनेटिकल मार्कर होते हैं। अब मॉलिक्यूलर मार्कर हमारे कितने तरह के हैं, एक हमारे मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स, जो पहली बार जो मैप किया था, जो हमारे सैक्स ने 1923 में जो मैप किया था, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर का के साथ हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टर लिंक था, ठीक है, तो उसको एज ए मॉर्फोलॉजिकल मार्कर यूज किया था, ठीक है। जैसे कि हमारा पिगमेंटेशन हो सकता है या फिर कलर्स हो सकता है, ये हमारा क्या है, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। देन हमारा क्या है, प्रोटीन बेस्ड मार्कर होते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, आइसोजाइम्स। आइसोजाइम क्या है, ये क्या है, इसका कैटालिटिक फंक्शन सेम होता है, सेम कैटालिटिक फंक्शन, ठीक है, बट डिफरेंट जीन के द्वारा कोड होता है। देन हमारा होता है एलोजाइम। एलोजाइम का क्या होता है हमारा, डिफरेंट अलील ऑफ सेम जीन, ठीक है। अब मार्कर स्टेट्स और देन हमारा डीएनए बेस्ड मार्कर होता है जो हमारा डीएनए सीक्वेंस के बेस पर आता है, जो वेरिएशन इन द डीएनए के सीक्वेंस में या फिर डीएनए के जो दो सीक्वेंस के बीच में जो साइज का डिफरेंस होता है उसके थ्रू हमारा उसके थ्रू जो मार्कर को हम डेवलप करते हैं वो हमारा होता है डीएनए बेस्ड मार्कर। अब मार्कर स्टेट सिलेक्शन क्या होता है कि जो हमारा इनडायरेक्ट सिलेक्शन मेथड होता है जिसमें हम मार्कर्स का यूज करते हैं अपने ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मार्कर स्टेट सिलेक्शन। इसमें बहुत सारे मार्कर्स इन्वॉल्व है, जैसे कि आरएफएलपी है, हमारा कोडोमिनेंट मार्कर है। देन आरएपीडी है, बस ये पूछ सकता है कि डोमिनेंट कौन सा है, कोडोमिनेंट कौन सा है। आरएपीडी हमारा कोडोमिनेंट मार्कर है। देन आईएसएसआर हमारा डोमिनेंट है, एसएसआर हमारा जो सिंपल सीक्वेंस रिपीट है वो कोडोमिनेंट है, एएफएलपी डोमिनेंट मार्कर है, ठीक है। और स्कार जो है हमारा सीक्वेंस कैरेक्टराइज एम्पलीफाइड रीजन, ये हमारा जो होता है यूजुअली डोमिनेंट होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ बैंड के बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि मतलब होमोजाइगोसिटी कभी कभी वो शो कर देता है, हेटेरोजाइगोस कंडीशन को भी, ठीक है। देन हमारा सीक्वेंस टैग साइट है, ये हमारा क्या है, कोडोमिनेंट मार्कर है।
देन हमें ये लास्ट स्लाइड है, इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं। जो हमारा मेज का पहला हाइब्रिड था वो था हमारा सिंगल क्रॉस हाइब्रिड पारस, जो कि 1959 में रिलीज हुआ था। और क्वालिटी प्रोटीन मेज की बात किया जाए तो विवेक QPM 9 है, ठीक है, ये 2009 में रिलीज हुआ था। राइस का जो है सो मतलब फर्स्ट सेमी डॉट वेराइटी IR8 था, और इंडिया में हमारा कौन सा था, जया। बासमती राइस का जो पहला हाइब्रिड था वो PRS 10 था। देन इसके बाद बात करें तो sorghum का पहला हाइब्रिड 1964 में NGP राव ने डेवलप किया था। देन हमारा पिजन पी का फर्स्ट हाइब्रिड जो आया था, जो कि हमारा GMS बेस्ट हाइब्रिड था, वो हमारा 1991 में ICPH 8। देन H4 1970 एंड वारालक्ष्मी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड रिलीज इन 1974। देन GCH 3 ये हमारा 1968 में रिलीज हुआ था, ठीक है। और इसमें हमारा कौन सा यूज हुआ था, टेक्सास पिस्टिलेट लाइन्स, ये हमारा फीमेल पेरेंट थी। ये हमारा क्या है, पिस्टिलेट लाइन है। ठीक है। देन हमारा सनफ्लावर के केस में BSH 1 हमारा पहला वेराइटी है। ओके, तो ये हमारा याद रखना है। इसका BSH 1 का फुल फॉर्म है बेंगलोर सनफ्लावर हाइब्रिड 1। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और होप जो है सो इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा, आप ये कोर्स ले सकते हैं। आपको CUT में तो फायदा होगा ही, और इसके अलावा आपके जो ICR एग्जाम्स है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप इस कोर्स को लें, it will really benefit you. Okay, and the validity will be till ICR PG examination. Okay, so thank you all. So हमारा ये सेशन कंप्लीट हो चुका है। If you have any doubt, you can tell me. हाँ, you are right actually. हाँ, okay, thank you all. If you have any question, just ask me. I will try to discuss it. Otherwise, thank you all for इतना पेशेंस रख करके सुनने के लिए। Okay, thank you.